Okay. So again, good evening, one and all. In this NISM series 5A Mutual Fund Distributors Certification Examination Training. See, this is going to be online interactive session on Zoom. Duration of training program which we set is 30 hours. And what actually going to be delivered, that is already as we planned, like from today. Today is the first session, 1st January, and we targeting that complete this training program by 25th January. So total 8 days, taking 4 hours for each session, right? So already I have shared the schedule. We'll try to strictly, try to follow the schedule. But exceptional situation, we be ready, and you will be informed if there is any change in a particular session. What is you are going to be receive here? See, in this training session, that is a live training session is going, so you can have a interaction with a trainer, like in this case myself. And also you will get recording sessions of videos for a period of 90 days, right? So, and you will also receive study material access, like PPTs, which is going with some around 700 slides, and there are the same or some around 700 plus multiple choice questions, career guidance, and counseling during the session. Now we have to understand what is the structure of this NISM certification evaluation, why this certificate, and because there are the participants, those are starting from basic. Some participants, they have never appeared, and that is the first time for them to be appearing here. Uh, अच्छा, इसमें से are you guys comfortable in English? Because see, I'm comfortable in English and Hindi. So uh, this examination is going to be conduct in English में आपका होगा, and because आगे भी आपकी जो study है, like you will see the आई मीन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो की स्कीम्स हैं और वेरियस प्रोडक्ट्स और कम्युनिकेशन जो भी है, वो आपको मोस्टली यू विल फाइंड इन इंग्लिश, राइट? सो yes, Miss Gargi will, I will try my level best to go with English and Hindi, but I will suggest you, because this session is a recording, so आप so you try. I mean, that English is, I'm not going to use some very hi-fi English, so it is easy to understand, right? बाकी कुछ जो है some words which is I'm going to be take Hindi, so make the things more interesting and easy to understand. अच्छा, so assessment structure क्या है इस एग्जाम का? See, there you will have a online test. आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा. या सो आपका जो है वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, दैट यू हैव टू बुक बाय विजिटिंग ऑन NISM वेबसाइट. आपको कहाँ पे विजिट करना है? NISM के वेबसाइट पे जाके आपको ये विजिट करना रहेगा. लेट मी शो यू. दिस इज द से NISM का वेबसाइट है ये. यहाँ पर आप जाएंगे, देन यू विल फाइंड ऑप्शन टू रजिस्टर. जैसे आपने, जैसे NISM का वेबसाइट, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस में क्लिक ऑन सर्टिफिकेशंस, then under certifications you have a certification examinations. Okay, then here you can find several certificates. Okay, so our certification name is NISM series 5A mutual fund distributor certification examination, right? So click on it, then you will see. So now what we are going to take, we are going with the
new syllabus that was launched in November 2024, and they will start examination based on the revised syllabus from uh, January 23rd in year 2025. अच्छा, अभी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? यू हैव टू रजिस्टर हियर एट NISM. यहाँ पे आप जाएंगे, देर इज ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन. जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो सेम वे यू हैव टू क्रिएट योर से योर अकाउंट. You have to put the your details like name, email ID, mobile number, Aadhaar number, PAN card or Aadhaar, and then you verify your email ID, mobile, and फिर आपका क्या है, login ID create हो जाएगा, and then you can choose the option for the examination. राइट, एग्जामिनेशन का आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, एंड देयर यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ 1500 रुपीज. ये आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, कंडक्टिंग बाय द NISM, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वेन्यू. आपको क्या है कि वेन्यू सेलेक्ट करना है. लेट मी, आई विल शो यू वंस आई हैव टू लॉग इन थ्रू माई पोर्टल. राइट, अगर है तो, अदरवाइज आई विल शो यू द स्क्रीन. आई मीन ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल जैसे आप बुक करते हैं रेलवे में टिकट ना, सेम थिंग आपको एग्जाम के लिए जो है, यू हैव टू सेलेक्ट द मॉड्यूल कि भाई आपने NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन. देन इट विल आस्क यू टू सेलेक्ट डेट, वेन्यू, वो जो है वो आपको सेलेक्ट करना है. एंड देन इट विल शो यू कि भाई आपको किस डेट पे ये जो है, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल. सो दे हैव, दिस इज अ 2 hours एग्जाम. सो स्टार्ट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक रहता है. सो दे विल, इट विल शो यू कि भाई हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल एट योर सेलेक्टेड वेन्यू. सो वंस यू आर श्योर कि भाई ठीक है, आई एम गोइंग विथ दिस पर्टिकुलर शेड्यूल, आपको उसको टिक करना है, एंड देन प्रोसीड एंड मेक द पेमेंट ऑफ 1500 रुपी. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फीस. एग्जाम जो है आपका 120 hours का होगा, सॉरी 120 minutes का है, विच इज 2 hours, एंड यू विल हैव 100 questions इन अ क्वेश्चन पेपर. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा. इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. तो राइट, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. Okay, and total you will get 2 hours, which is 120 minutes. 50% is the passing marks is required, and the certification validity is 3 years. Okay, so that's about this assessment. Okay, fine. So now going to start session 1. This is about our disclaimer. Okay, this is about myself. So myself, Amit Gupta, and I have 20 years plus experience in this financial industry. So I did my engineering in year 2001 in electrical from MBM Engineering College, Jodhpur, Rajasthan. It's a center. It's a state government college. It's the first engineering college in Rajasthan. And then I did my MMS in finance from NIT, which is National Institute of Technology. It's a central government deemed university. Then I further pursued say post graduation in say MS. So MS in finance, which is uh, it's having a CFA chartered holder pathway by ICFI University, and having some more things like I did CFP. I passed the certification like CFP, CCRA, and CWM, which is Chartered Wealth Manager. CFP, which is Certified Financial Planner, CCRA, which is the Certified Credit Research Analyst. So these are the things, and worked around 10 years full time with the different corporates, and then I also associated as a visiting faculty with the various management institutes, like including Narsi Monje, then
Niti in Powai for their MBA program, and the Alkesh Dinesh Modi College, Symbiosis. So most of the, let's say, 4 to 5 Symbiosis and many others. So that's about me. So I'm in the say in a training from last you can say almost 10-11 years in the field of training. Fine, guys. Okay. So NISM certification examination. So National Institute of the Securities Market, that is the full form of NISM, performs the two functions delegated to it under the Securities and Exchange Board of India. Right. So the SEBI, which is the Securities and Exchange Board of India, which forms NISM as a subsidiary entity. The objective of NISM is to provide a education. Right. So So it is offering the mandatory certification examination for associated person in the securities market intermediaries. That is the important thing. NISM basically offering a mandatory certification examinations, means there are the certification, those are mandatory. So such certifications basically are providing by NISM. A part of that, NISM is having a many other certification and courses, but uh, there are the certificates which is mandatory by SEBI, that associated person must pass that certificate to be work or to own a particular say securities market intermediaries. Right. So it is offering a continuous professional education. A part of that, having a there are the certification examination. So these certifications having a say there is a validity, like for example, sometimes it is 3 years. Some certificates are having a 5 years. So these certificates, say once uh, I mean going to be completing their validity. So then uh, candidate candidate must require to renew it, right? So there are the CPE program, that is called a continuous professional education program for associated persons in the securities market intermediaries. तो उनके लिए क्या है कि भाई ये CPE प्रोग्राम जो है ये उनको दैट इज अ 1 डे प्रोग्राम रहता है. इट इज सम अराउंड से 5 to 6 hours का ये प्रोग्राम है. So now there are the two options available. One is the physical classroom session, that is continuous professional education, and another is online, like like you are attending this session. So online recorded है ECP, राइट. सो ये आपके लिए उसमें रहता है, सो दैट यू हैव टू अटेंड, एंड उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है दैट विल बी अगेन renewed for a period of a next 3 years, right? Or another option is available कि you have to reappear in the exam, right, and get your certificate renewed, right? तो आपके सामने ये दो ऑप्शन है, CP ECP का हो गया, एंड दूसरा है you appear in the exam. वेर इज द ग्लिच, यहाँ पे एक ग्लिच ये है कि सीपी या ईसीपी जो आपका है, सीपी मीन्स यू आर गोइंग विद द ऑफलाइन एंड ईसीपी मीन्स यू आर गोइंग विद द ऑनलाइन. इसमें यह है कि आपका जो सर्टिफिकेट का एक्सपायरी है उससे पहले यू हैव टू रिन्यू इट. आई मीन द लास्ट डेट इज योर एक्सपायरी. उसके बाद जो है यू कांट अपीयर और यू कांट अटेंड द सीपी ट्रेनिंग. वो आपका रिन्यूअल नहीं होगा, बिकॉज द नेम इज कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन. सो इट इज वैलिड ओनली कि अगर सपोज कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट है वो 5 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है दिस ईयर, तो आप 5 जनवरी तक अगर आपने सीपी प्रोग्राम अटेंड किया है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल के लिए चला जाएगा. बट इफ फिफ्थ आपका निकल गया एंड नाउ ऑन अ सिक्स्थ यू आर सिटिंग एंड जस्ट थिंकिंग कि नाउ लेट मी अपीयर इन अ सीपी या ईसीपी टू रिन्यू माय सर्टिफिकेट, देन दिस वॉन्ट हैपन. देन देर इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट कि आपको एग्जाम में अपीयर होना है. ओके ओके. सो जनरली क्या होता है, ये सर्टिफिकेट है विच इज हैविंग 3 years का वैलिडिटी है. सो एज द लास्ट 1 year इज रिमेन्ड for the validity of your period of your certificate. So that time आपका जो है ऑप्शन सीपी का या ईसीपी का ऑप्शन इज ओपन, राइट, कि आप सीपी या ईसीपी जो है दैट यू कैन अटेंड
एंड आपका जो रिन्यूअल है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अ सर्टिफिकेट एक्सपायरी. सो डोंट वरी कि भाई आपने सपोज कि 6 महीने पहले सीपी अटेंड कर लिया और आपको सर्टिफिकेट रिन्यूअल जो है वो आपको इशू हुआ, तो लेकिन वो सर्टिफिकेट रिन्यूअल है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ योर सर्टिफिकेट एक्सपायरी. क्लियर. सो ये एक इम्पोर्टेंट है. सम पीपल हैव अ कंफ्यूजन कि सर अगर 6 महीने पहले हमने इसको रिन्यू कर लिया तो हमारा तो क्योंकि अब ओनली वी विल गेट अ इफेक्टिवली 2.5 years ऑफ अवर सर्टिफिकेट. तो ऐसा नहीं है. आपका सर्टिफिकेट का जो लास्ट आपका डेट रहेगा उससे आपका जो है नेक्स्ट 3 years आपका उसमें ऐड होगा. सो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ योर रिन्यूअल वैलिडिटी. Next is the certificate will be revalidated for a period of 3 years from the date of expiry of the existing certificate. Examination as mandated by SEBI. So NISM series 5A, right? Mutual fund distributor certification examination is mandated for the following categories of associated persons like distributors. So distributors are means those are the mutual fund distributors, agents, or any person employed or engaged or to be used or engaged in the sales and or distribution of mutual fund products. Right. तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उस एंटिटी के साथ में एसोसिएटेड है, एज एन एम्प्लॉय है, एजेंट है या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, it is mandatory for you to have a pass this certificate. क्लियर. तो आप जिस सपोज कीजिए कि आप वहाँ पे किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आप उनके अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, तो बट यू मस्ट हैव दैट सर्टिफिकेट टू क्लियर. या फिर आप वहाँ पे सेल्स में हैं, ठीक है, स्टिल यू मस्ट हैव टू बी क्लियर दैट सर्टिफिकेट. आपके लिए पास करना जरूरी है. ओके. However, if the said associated person possesses a valid certificate by passing before June 1st, 2010, the MP Mutual Fund Advisors module, he shall be exempted from the requirement of NISM above certification exam. तो ये अभी तो जो है हार्डली आई मीन यू विल सी द एनी पर्सन विच इज फिटिंग इन दिस क्राइटेरिया. ओके. Next is examination objective. What is the objectives? On successful completion of the mutual fund distributors examination, the candidates should know the basics of mutual funds, their role and structure, different kind of mutual fund schemes and their features. So what are the different type of the mutual fund schemes? See, first of all, you have to be, I mean, you must clear that mutual fund is not a basically investment product. Mutual fund is basically a an investment vehicle. Means via mutual fund you are going to invest in a various financial products like in a equity shares, or say in a debt instruments like a debenture, bonds, or uh, like corporate deposits, right? So mutual funds are not basically investment instruments, they are basically investment vehicle, right? So they are helping you to select the better investment opportunities, constructing a portfolio, right, and meeting the your financial goals by providing a different type of the investments schemes. Clear. So understanding how the mutual funds are distributed in the market place, how schemes are to be evaluated, and how the suitable products and services can be recommended to investors and prospective investors in the market. So now there are the investors, they are willing to take the exposure in this securities market, but not having a say much knowledge about stocks, how to do the valuation, whether stock is uh, uh, say fairly valued, undervalued, or overvalued. So that scenario, how to construct a portfolio, if an individual is not having a much familiar with those things, not having a much time to construct a portfolio, in that scenario it is better they have to go with the route of a mutual fund.
right? So that's why I say that mutual fund is a vehicle, right? So it is helping you to um, to uh, helping you in the investments to meet the your goals. Clear? So it is something like suppose I have my own car, so I will take my car and having a drive it and to reach to the my destination. And suppose I don't have that car, or I don't have a interest in a driving or something, so I will basically take a bus. So and the bus will actually helping me to reach the my destination. So mutual fund is basically kind of a bus, which is knowing that route, which route they are traveling, and they how much time they take, and something like, they helping you to reach the your destination. Okay, so this is, we already discussed about the assessment structure. Now, what are the chapter wise weightages for the mutual fund exams? So here total we are having a 12 units, right? And like unit 1, 2, and so there are the different weightages are assigned. First thing, you must have to clear that all questions will be a multiple choice type. So you will have a multiple choice type questions. First, it is clear, right? Second thing, all the questions will have a equal weightages. Equal weightages means 1 mark for each question. So that thing is also clear, that 1 mark for each question, multiple choice type of the question. So uh, you will have a 4 choices, or you will have a 2 choices. I mean, some questions you will find those are having a yes and no type, right? Some questions you will find that there are the 4 options, A, B, C, D. Okay, so this type of the questions you will have, and there is a no negative marking, right? So there is no negative marking, and another thing is 50% is the passing percentage. Okay, so that is about this evaluation. 2 hours का exam होगा, 120 minutes, right? So total 100 questions, and you will get 120 minutes. So in that situation, if you go with proportionately assigned the time, you can say 1 minute, 1.2 minutes, right? So 1.2 minutes you will get for each question, but that is not the right way, uh, because there will be some questions which is that will take hardly 15 to 20 seconds to solve, and there will be some questions may take 2 minutes, right? So the right approach is to attempting a question paper is that you said ki, okay, there are the 100 questions, so total is 120 minutes. So it means 25 questions will take say 30 minutes, right? Next 25 questions will take a 30 minutes, next 25, next 30 minutes, and then remaining 25 questions will take a 30 minutes. So you can divide the question paper in a 25, 25 in a 4 part, and similarly you divide the time in a 4 part like a 30, 30, 30, 30. So total is 120 minutes. So that is the more viable approach, which is I generally use. Ki, uh, you have to keep watch the, you have to watch your time and see, once you completed your 25 questions, you see the how much is the time you spent, right? So ideally it should be 30, but if you suppose having a more than 30, like going to say 35 or 40, it means next 25 questions we are going to attend. So there you have to take a little more, I mean the faster speed, so complete the next 25. So you have to be follow like 30 minutes criteria for completing a 25 questions, that we have divided the whole 100 questions in a 4 part. Okay, so that is the uh, say more relevant approach which I generally used, and found that it is easy to say complete the question paper without losing that chance that okay, I left 5 question or 10 questions unattempted.
this type of the mistakes you will not experience, and will not having a facing any type of say anxiety. Means what happens, at the last, suppose you have a more number of questions left to attempt and the time is less, so in that situation you may be facing the anxiety or say aggression, okay, that too much questions are there pending. So it is better you have to be divide the question paper in a four parts of 25 questions each, and divide the time also in a four part, and go straight forward to attempt the questions paper. uh, that will go in a smooth manner. Okay, so that's about your weightages. So today we'll try to complete the unit one, because we are not going much more, because today it is an introductory session. So my focus is on to understand what is the mutual fund distribution, what's that business, why this business is so important, and how that business future scenario, who are the major competitors, right? So those things I just want to give you the some insight, so you will understand ki what you are going to do and how you can proceed further in this learning. So your commitment has to be developed towards this certification, and you can link with your financial goals. Okay, how this certification will helping you to meet your financial goals or say your business requirement. Okay, so there is some FAQs which is there, which is say I most of these things I already discussed, but just sake of recording I have to show here. So as I said, there is a fees is 1,500 rupees that you have to pay to NISM, right? And if you find any difficulty, right, so you can write an email to certification@nism.ac.in, right? So getting the clarity from there. And right, yes, one important thing, suppose you have chosen a date, examination date, assume it is like a say uh, 30th January. Okay, now you are realizing that uh, due to some reason you are not going to appear on 30th January, and probably you are going to appear on a say later, means like say uh, third Feb or fourth Feb or something, like it's again you need to check the availability. So in that scenario, you can say what the NISM is providing. As per my knowledge, they are providing you to reschedule your examination. For that, you have to apply 72 hours before, means 3 days before. You have to apply for the reschedule of your examination and select the date, time, venue. So then you can reschedule it. So 30th, suppose you have an exam. So you can say by 26th, you can do the rescheduling. If it turn to be 27th, then this rescheduling won't allow you. That option will not highlight. That is based on my experience. Clear? So you keep in mind that 72 hours before you have to reschedule, and this reschedule is available only once in your particular exam. Okay. Yes, on NISM website, you can also see there is a mock test is available. That is just, I think there are some 40-50 questions are there for sake of your practice, right? So that also you have to be look at it. Otherwise, you know what, I'm going to be provide you the study contents. I try my level best to keep incorporate say most appropriate questions, practice questions, chapter wise, and also the complete your complete book, a complete syllabus based. There are the mock test that I have prepared, so which is based on the new syllabus. You will get it. Yes, one important thing. There are the people ask the question ki what is the age criteria for appearing this NISM certification? See, there is no age criteria, and as such,
there is no as such education criteria, right? So anyone can appear. As I have, let me show you the examination assessment structure. See, first thing is I hereby submitted the pen, photograph, date of birth, contact details, employee details, etc. to something. So, so what is required? You require an identity proof, like either you have a PAN card or Aadhaar card or driving license, passport for booking this exam, right? Yes, you are allowed to carry your own calculator. So you can see your own calculator and pen for the purpose of examination. I am aware that the calculator should be silent while operated, should not have any computer connectivity, and should be of 6 functions and 12 digits. I agree to keep all my belongings, including but not limited to books, paper, mobile phones, tablet, PCs, cameras, other gadgets attached in the switched off mode outside the test center or in the locker assigned to me. So most of the test centers, you will find a locker. They are assigning a individual locker to each candidate. So there you can keep all your these items, right? So be remember, don't carry your mobile or camera or something in the examination seat where you are going to be I mean going to be sit. All these things you have to be put outside in a locker. And yes, you have to carry a physical, admission card. So take the printout of your admit card and carry with you in the exam hall. So certification issuance, I am aware that certificates are generally issued within 10 to 15 working days from the date of the examination. So see, once you appear in the examination, you will get a certificate which is uh, that is a giving you a uh, that certificate is not the actual certificate. It is basically a like your marks or score, right? So the actual certificate of NISM that you will see after say some around 10, 12 days, 15 days, that uploaded that update on your website. Later I have to show you that certificate, how it looks like. So this type, you can see the certificate. Okay, so you will get a okay. So you will have a see if you provided.
See, you will get this certificate when you will provide your PAN number. But if you have not provided the PAN number, and but it you can appear in the exam. There is no one going to stop you to appearing in the exam, right? For appearing in exam, you required your ID proof, like a Aadhaar number is also valid. But if you required a certificate like this, then PAN card is mandatory. First thing, clear? Second, so now you will have this certificate once you provided the PAN card. Now the thing is, if you are going with a mutual fund distributor registration, right? For that there is a different criteria. In that there is a minimum criteria is कि भाई ये certificate is mandatory. ये certificate तो है ही, उसके अलावा now they have 18 years of age, and then you are say like a graduation or something, like, so there is a criteria is there. Clear? So for a mutual fund distributor, they have a, I think it's a 10th or 10th pass or 12th pass plus you are this NISM certificate, and 18 years plus age, 18 years or above. That is the required for a mutual fund distributor to register with a MFI. Clear? Okay. So apart of that, having several other certifications. So I think I have. It's a commodity derivatives investment advisor level 1, NISM series 20 when we portfolio manager. Then SORM, which is securities operation risk management, equity derivatives certification, investment advisor level 2, securities market foundation certificate, which is NISM series 12, research analyst certificate, which is NISM series 15, right? Retirement advisor certificate, which is NISM series 17, and this CFP, and there are many certificates already expired, right? So then see, I generally go with the appearing in the exam. That is my that I prefer, because by appearing in the exam mode, I am getting a much more the opportunity to learn, to read, to understand the new updates in a better way, right? Yes, it takes a little more time, but it gives me the confidence to having uh, a good understanding, right? So I prefer to go with the examination mode to renew my certificate. Okay, so one important thing, for having a NISM exam, there is no as such minimum qualification, or say pen, there is no PAN card required, right? So if you are in a 10th standard, you can also appear in a NISM exam. आप उसमें हो सकते हो, but now you have to be registered with a MFI, either as a having a ARN, that is a MFI registration number, or EUIN, which is called a employee unique identification number. Then आपका 18 साल का एज होना मैंडेटरी है, एंड NISM का जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको इशू करना है, ठीक है, उसके लिए पैन कार्ड फिर आपका मैंडेटरी है। एग्जाम में आप प्रिपेयर हो जाओगे, आपका एग्जाम का मार्क्स भी आ जाएगा, स्कोर भी आ जाएगा, बट आपको सर्टिफिकेट यू विल गेट वंस यू अपडेट योर पैन नंबर। क्लियर? एंड उसके बाद फिर क्या है, अगर आपका 18 ईयर्स का एज है मिनिमम, तो आप आगे के जो है एमफी रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोसेस कर सकते हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्लियर? ओके, तो आपको और ज्यादा इसके अंदर है गाइडलाइंस, आई जस्ट हैव टू बी पुट इन द चैट बॉक्स। आप वहां पे you can be getting a more information about the candidate instructions. Okay, fine. अच्छा, री इवेल्युएशन ऑफ एनआईएसएम सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या करने का है कि व्हेन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑनलाइन,
and if you will realize कि यार this question is having a wrong answer or wrong something is there or right, so that question you have to be write down on the sheet which is given by the आपका invigilator. So you have to be write down on that sheet first thing. And दूसरा क्या है कि when you are going to submit the question paper online this computer based, there you have to put that question कि भाई इसमें ये इशू है, एंड जो आपने शीट पे यू हैव टू नोट यू नोटेड डाउन, राइट, वो आपको शीट जो है वहाँ के जो इन्विजिलेटर है उनको आपको देना है कि सर ये चार क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स या इस क्वेश्चन में ये एरर है, एंड राइट, सो दिस क्वेश्चंस आर रॉन्ग और इनकरेक्ट और समथिंग। देन आपका उस टाइम पे अगर आपने दिया है तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो इन्विजिलेटर आगे जो है वो री इवेल्युएशन के लिए या उसको रीचेक के लिए आपका जाएगा। इफ यू हैव नॉट डन दैट प्रोसेस एंड यू जस्ट कम आउट फ्रॉम द एग्जाम सेंटर, सबमिशन कर दिया आपने क्वेश्चन पेपर और आपका जो भी है, एंड उसके बाद इफ यू आर गोइंग टू रेज द कंसर्न तो आपका री इवेल्युएशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, इज गेटिंग द माय पॉइंट? ओके, तो बाद में आप एक बार एग्जाम सेंटर से बाहर आ गए उसके बाद अगर आप कोई मेल ड्रॉप करोगे कि सर ये क्वेश्चन में ये गलत था वो था, वो एक्चुअल में एंटरटेन नहीं होगा है। आपको अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है, आंसर में कुछ मिस्टेक है, यू हैव टू बी नोटेड डाउन ऑन अ शीट, राइट, एंड एट दैट टाइम वंस यू सबमिट और एट द वर्ड्स ऑफ सबमिशन यू हैव टू इन्फॉर्म टू द इन्विजिलेटर कि सर इसमें ये पांच क्वेश्चंस हैं विच इज आई हैव हाईलाइटेड, राइट, ये मेरा सीक्वेंसेस है, एंड दैट इज यू हैव टू ब्रिंग इन द रिकॉर्ड, राइट। तो वो फिर क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड में लेंगे एंड देन इट विल सेंड टू द जो भी कंसर्न अथॉरिटी रहेगा इवेल्यूशन का एग्जाम का, दे विल हैव टू लुक एट द योर क्वेश्चंस। Okay, so next is now our chapter 1. Meanwhile, now if you have any questions, feel free to ask, and then we'll take a short break of 10 minutes. Right, so now it's a 7, no? Okay. If you have any questions, feel free to unmute and ask. Sir, I have one question. Yeah, please go ahead. Sir, as you have told just now that after giving this exam, we will get a certificate. But for mutual fund, become a mutual fund distributor, we have to register for MFD registration. We have to go for MFD registration, and from there we get ARN number, that is MFD registration number. But you have also told that EUIN number we have to also get. So what is the basic difference between EUIN and ARN? क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों नंबर लेना पड़ेगा या सिर्फ ARN से ही काम चल जाएगा? Yeah, okay, nice question. Let me explain you. See, this NISM, I hope my screen is visible. Yes, yes, yes. Okay, so this is my NISM series 5A mutual fund distribution certification. ठीक है, so that is a basic minimum requirement, means it's a minimum requirement. It is not the whole, I mean total requirement, it's a one part of the your requirement. Yes, sir. Okay, once you have this NISM certificate, now you are going for the employment. It is similar to like जैसे आपने LLB कर लिया, ठीक है, आपने लॉयर, आपने जो है लॉ की क्वालिफिकेशन कर लिया, एंड नाउ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस इन अ से आपके सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट में,
तो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द बार काउंसिल, Yes, sir. Yes. राइट। ऐसे ही अगर आपने एमबीबीएस कर लिया है और आपको प्रैक्टिस करना है, तो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद समथिंग, आई थिंक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, राइट, आईएमए, राइट। सो यू टेक द लाइसेंस देम फॉर द प्रैक्टिस, क्लियर, Yes. Yes. राइट। सो सेम थिंग कि आपने एनआईएसएम का सर्टिफिकेट किया है एंड नाउ यू वांट टू बी अ वर्क एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको क्या है कि एमफी, which is the Association of Mutual Funds of India, Association of Mutual Funds in India, right। तो ये म्यूचुअल फंड्स जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, देर आर द नियरली 50 असेट मैनेजमेंट कंपनीज एट प्रेजेंट। तो उनका क्या है, एक ये एक एसोसिएशन बनाया। तो यहाँ से आपको क्या है कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप एक काइंड ऑफ लाइक अगर कंपेयर करें तो यू कैन से इट्स सिमिलर टू लाइक अ बार काउंसिल हो गया। अब ये एमफी है, ये बेसिकली एमफी का जो कनेक्शन है वो है सेबी से, Okay. ठीक है ना। एमफी को एक्चुअल में क्या है कि वो यू कैन से लाइक अ इंस्ट्रक्शन जो है विच इज गिवन बाय सेबी। Means SEBI regulates the MFI. You want. हाँ मतलब वैसे तो क्या है, इट्स इंडिपेंडेंट है, बट सेबी इज हैविंग अ इन्फ्लुएंस ऑन एमफी। सेबी जो है वो एक्चुअल में एमफी को गाइडलाइंस देता है कि भाई आपको ये करना है, देन एमफी एमफी परस्यूड एंड गिविंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स कि भाई आपको ये करना है, Okay. ठीक है ना। तो इस तरीके से है कि यू रजिस्टर्ड विद एमफी एंड एमफी इज बेसिकली कनेक्ट विद सेबी, ओके। अब आता है कि भाई आपका क्या इसमें है, एक है एआरएन, एआरएन which is you say एमफी registration number, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज EUIN, that is the employee unique identification number, ओके। तो ARN जो है दैट इज एक्चुअली योर मेन कोड। आपका जो मेन कोड होता है, जैसे आपका दुकान का कोई लाइसेंस नंबर है तो वो ARN हो गया आपका, Okay. ठीक है। सो दिस ARN कैन बी इशूड टू, आप जो है ये आपके इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल Hmm. और कॉरपोरेट, राइट, और यू कैन से नॉन इंडिविजुअल। तो Okay, sir. उसको जो है वो दिया जाता है नंबर, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको हम बोलते हैं ARN, ठीक है। अब Okay, क्या sir. है कि अगर इफ दिस ARN इज इश्यूड टू सम इंडिविजुअल, है ना, तो वो इंडिविजुअल जो है उसको ARN नंबर होगा प्लस उसका एक EUIN नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब Okay, इफ sir. दैट इंडिविजुअल इज डूइंग अ प्रैक्टिस ऑन हिज ऑन, तो वो ARN जो है उसी में उसका EUIN उसका खुद का ही आ रहा है, Sir. ठीक है। बट इफ एन इंडिविजुअल is working with a corporate entity which is called a non-individual, and that corporate entity is having a ARN, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है
उसके नाम से ARN नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्या है, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सम ABC पर्सन इज वर्किंग विद अ बैंक, Yes, sir. XYZ बैंक, तो जो ARN है वो XYZ बैंक के नाम से इशू होगा, और उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दैट एम्प्लॉय विल गिव देयर EUIN, एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। Okay, sir. Okay. ठीक है, अब इसमें यह है कि भाई वाई दिस EUIN, क्या इसका है, तो इसका फंडा क्या है कि सपोज आई एम वर्किंग विद अ बैंक एंड आई हैव माय EUIN, और मैंने कुछ बिजनेस किया, और वो बिजनेस जो है वो बैंक का जो ARN कोड है, हाँ. उसमें वो कोड उस पर मेंशन होगा, और उस कोड के थ्रू जाएगा। ठीक है, और जब तक टिल आई वाज विद द बैंक, मैं काम कर रहा था, तो मैंने साहब मान लीजिए कि 5 करोड़ का बिजनेस किया, करीबन 30-40 क्लाइंट या 50 क्लाइंट मैंने एक्वायर किए। ठीक है, तो उन सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर ARN कोड जाएगा बैंक का, और EUIN जाएगा, दैट इज माई सेल्फ, मेरा। ठीक है, अब क्या हुआ कि एज्यूम करो कि दैट एम्प्लॉय left the organization and joined some other organization, and now that client which he acquired for the previous bank comes with the some issue, some complaint। Yes. ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि बैंक बोलेगा कि भाई ये जो है, आपको जो भी मतलब इसके अंदर आपको गाइड किया है, या आपको जो भी मतलब आपको कम्युनिकेशन किया है, इफ देर इज सम मिसकम्युनिकेशन या समथिंग हैपेंस, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हाउ डू यू ट्रैक दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो ये जो एम्प्लॉय है, इसका जो EUIN नंबर है, दैट इज द यूनिक नंबर, दैट विल नॉट चेंज। इट इज सिमिलर टू लाइक जैसे आधार नंबर होता है ना, आधार कार्ड का, Yes. तो ये वैसा ही है। तो दैट एम्प्लॉय विल गो टू एनी एनी प्लेस, एनी विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे EUIN उसका जो है वो सेम काम में आएगा। तो इट इज इजीली यू कैन ट्रेस आउट वेयर इज नाउ दैट एम्प्लॉय, राइट, पहली चीज। Yes. दूसरा ये है कि that employee who is doing the business in the his code, like putting his EUIN and बैंक ARN, बैंक हो गया या कोई नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, कोई कॉर्पोरेट है, तो अगर उसको लगता है कि नहीं यार मुझे अपने क्लाइंट का बिजनेस देखना है, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, तो वो अपने EUIN के थ्रू उसका बिजनेस देख सकता है। Okay, sir. ठीक है ना, तो मतलब एक सेग्रीगेशन ऐसा कर दिया कि भाई कंपनी है तो बिजनेस जो है वो कंपनी का ARN कोड में आ रहा है, और एम्प्लॉय का जो है वो EUIN जो है उसके अंदर उसमें एम्प्लॉय का रेफरेंस जा रहा है। Yes. ठीक है, कि भाई ये एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय का जो है, तो उसको हम EUIN के थ्रू उससे ट्रेस कर रहे हैं, और कंपनी के लिए भी इजी हो जाता है उस एम्प्लॉय के बिजनेस को देखना कि भाई इसने कितना बिजनेस किया है। एंड इफ इन फ्यूचर देर इज some say query or some concern arises by the investors, तो Yes, sir. उस एम्प्लॉय को जो है ट्रेस करना इज इजी। Easy हो जाता है. ठीक है ना, तो ये फंडा है इसमें। तो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है, सॉरी इंडिविजुअल जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उस कंडीशन में तो क्या है कि ARN एंड EUIN, तो ARN होगा, और वही एम्प्लॉय, वही उसमें एम्प्लॉय खुद ही होता है, इंडिविजुअल जो है एंटिटी, हाँ. तो उसमें तो एम्प्लॉय वो खुद ही होगा। ठीक है ना, हम्म. तो यहाँ तो क्या होता है कि इंडिविजुअल के नाम से ARN होगा, और इंडिविजुअल का ही EUIN होगा। होगा. लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग विथ समवन, तो वहां पे ARN जो है वो कॉर्पोरेट का होगा, और EUIN जो है वो आपका होगा, Employee का. एम्प्लॉय का होगा। तो इन दैट सिचुएशन यू डोंट रिक्वायर टू अप्लाई फॉर ARN। तब Okay, आप sir. क्या Okay. करोगे कि आप एमफी के पास में सिर्फ EUIN का जो है उसके लिए एप्लीकेशन डालोगे एमफी को, कि यू हैव टू इशू मी अ EUIN नंबर। Okay, sir. ठीक है ना, आप जिसको ARN चाहिए वो ARN इश के लिए करेगा, और जिसको EUIN इज रिक्वायर्ड, that they will only go for the EUIN application to MFI। Okay, sir. Clear? That's the funda of ARN and EUIN। Understand, sir. Okay, ठीक है। Any other question? No, sir. No, sir.
Any other participant? Gargi, is all clear? Ishika, Oni, Naomi, Prashant, Rohit. Okay, fine. So guys, now let's take a short break. एक हम 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं because अभी now it's a 7:20, तो 7:30 पे रिज्यूम होते हैं. तो अपना क्या हो गया 1.5 आवर्स, एंड उसके बाद फिर हमारा जो है विल कंटिन्यू फॉर अ नेक्स्ट जो भी है रेस्ट ऑफ द टाइम. आई थिंक आपके लिए भी क्या है कि इट्स फर्स्ट फर्स्ट डे है, सो प्रॉब्ली यू आर आल्सो फाइंडिंग थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक 10 मिनट्स का. तो शार्प 7:30 पे वी विल रिज्यूम. साउंड्स गुड, बिकॉज नाउ गोइंग टू बी टेक द सेशन जो है अपना चैप्टर 1. ओके, थैंक यू. So the first unit, which is investment landscape, need to understand what is the investment and what's the difference in a saving. See, when we say I'm going to save money and another is I'm going to invest money. See, these two things are looks similar but are not the similar, right? See, when we say the saving means there is a some assured or guaranteed return, right? So like saving money with a bank, like a bank FD, or saving in a government securities like government bond. These are the saving instrument. So saving is having a somewhere a guaranteed return or assured return, right? So there is a predefined, you can say ki that much will get a return, whatever it is, say 6%, 7%, something. Then another thing comes in the picture is investment. See, when we say the investment, then investment is not having any assured return, no guaranteed. One thing you must understand the difference. Whenever you are going with the any investment product to sell or distribute or advise to any of your client, or whether you have some communication, never ever you have to mention that there is a some guaranteed, because in investment there is no guarantee. It is similar to, like, you can say you are taking an admission in a college. Can a college give you the guarantee of a job? No. They can provide you a placement assistance, but there is no guarantee of a job. Similarly, if you are eating a if you're approaching a doctor, can the doctor guarantee you that you will be, I mean, cured or become a healthy? No, they can do the process, they can recommend prescribe you some medicines, do some treatment, but there is no guarantee. Your kid, son or daughter, is going to school, studying there. Is that school can guarantee that your son or daughter uh, will become a so and so, I mean, will have a career or become a doctor or engineer or something? No. They can provide education, they can provide proper teaching training, but there is no guarantee कि भाई आपका son जो है या daughter है will become a doctor, engineer, or say scientist or pilot, right?
Another example you can say about your friendship, your relationship. You have a very can you give the guarantee in your relationship कि भाई ये मेरा suppose there is some person is your friend, can you say कि नहीं यार ये friend तो मेरा जो है which is I can give you the guarantee? नहीं, there is no guarantee. It's a whole, I mean, you have to put the efforts, and that efforts make something like a similar to a feeling like a guarantee. That happens in the case of a investment. When I say ki there is a possibility, there is a expectation that return can be generated in range of some around say 15 to 17%. That means there is a possibility. So we are going with the some process, uh, some way, like like a portfolio construction, investments, diversification, rebalancing. So we can try to meet like a 15 to 17% return at least, right? And that you can have to be look at the our historical say performance, right? On that basis you can just think about ki there is a possibility ki we can deliver you that much return. Again, there is a possibility, there is nothing is guarantee, right? So that is the very very important concept in the investment, right? So investment instruments never ever having a any guarantee. तो गारंटी वर्ड कभी नहीं आएगा. Guarantee only comes with the saving instruments. सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स ही गारंटी दे सकता है, लाइक वी आर गिविंग यू द गारंटेड 6% रिटर्न लाइक अ बैंक एफडी. ठीक है ना. इन्वेस्टमेंट्स में कभी भी गारंटी नहीं आएगा, बिकॉज दैट्स अ मेजर मिस्टेक पीपल मेड इन देयर लाइफ. काफी समय हो जाता है दे आर इन अ प्रैक्टिस, बट दे नेवर नेवर एवर अंडरस्टैंड दैट सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है. तो दैट्स अ मेजर डिफरेंस. सेविंग जो है वो गारंटी के साथ में है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके एक अनसर्टेनिटी के साथ में है, इन समथिंग लाइक हाँ ये एक्सपेक्टेशन है, देर इज अ पॉसिबिलिटी है, देर इज अ वी वी आर ट्राइंग टू अचीव like something, but you will never write a guarantee. Clear? Okay. Now the an individual is having a various type of needs. So that needs, or say the goals, that we have to be categorized like short term needs versus a long term needs or long term goals, right? So how you have to do it? So you will ask to the your say investor or client, sir, we have to be put the our प्रायोरिटीज, लाइक कि भाई आपका शॉर्ट टर्म नीड्स क्या है, इसको हम लोग पहले यहाँ मेंशन करते हैं, एंड देन आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स क्या है, बेस्ड ऑन द टाइम आप उसका मेंशन कर लीजिए कि सर आपका टाइमिंग क्या है, इसको भाई ये आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में करना है, ये 6 मंथ्स में है, ये 1 ईयर का है, ये 2 ईयर्स का है, ये 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 15 ईयर्स. टाइम बेसिस पे आप उसको प्रायोरिटीज को एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को आप इसमें कैटेगराइज कर लीजिए. क्लियर? That is the way like how to you proceed for this assessing or say understanding the client requirement. Now you have to ask your client ki you have to make the your goals, financial goals based on the importance, like कि भाई important है या not important है. दूसरा कैटेगरी हो गया कि भाई ये अर्जेंट है या इट इज नॉट अ अर्जेंट. क्लियर? तो आपको ये चीजें जो है उसके अंदर सेग्रीगेट करना है, आपको उसमें डिवाइड करना है ऑफ द क्लाइंट योर गोल्स. ओके, तो सेम थिंग विच वी डिस्कस सेविंग और इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग है तो इट इज हैविंग अ सेफ एंड सिक्योर, एंड generally we can say the saving precedes investing. Means when we saved money, that saved amount is going to be invest, obviously.
सपोज समवन इज वर्किंग इन एज अ सैलरीड पर्सन, तो वो अपनी सैलरी में से एवरी मंथ ही विल सेव फर्स्ट, पहले वो सेव करेगा, एंड उस सेविंग, दैट सेविंग इज गोइंग टू बी डिप्लॉयड, दैट इज कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट, राइट? नाउ वी हैव टू लुक एट हाउ इज द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कैसे ये बनता है. तो पीपल अर्न मनी एंड स्पेंड मनी, they pass through the various phases in their life cycle. During the some phases they earn more money than they spend, in other phases they earn less money than they spend. Therefore sometimes they have to borrow money to meet the shortfall, and in other times they end up having the surplus money. तो ये आप देखेंगे कि इन अ ह्यूमन लाइफ जो आपका है, that type of the situation happens कि भाई sometimes we have a surplus money, sometimes we are having a shortfall in a money, right? तो अगर surplus है तो we are going to invest or save, we have a short, or if we are having a shortfall then we are going for the borrowing, right? तो ये आपका पूरी लाइफ में आप देखोगे तो ये फेज आपका आपको देखने को मिलेगा. These are the two things happens, like either you are having a surplus or you are having a deficit, मीन्स यू आर गोइंग टू बोरो. ये दो चीजें आपको मिलेगी. अच्छा, अब गोइंग विथ दिस टू थिंग्स, अब आपको अगर बोरो करना है देन हाउ कैन यू बोरो, और यू कैन बोरो फ्रॉम द व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल. आप बैंक से बोरो कर सकते हैं, यू कैन बोरो बाय इशूइंग योर ओन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स, corporate deposits, like I'm talking about a corporate perspective, like. And same thing, if you are having a surplus money then you are going to invest. So you can look at investments in various equity instruments or various debt instruments. तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस पूरे मार्केट में, देर आर द पीपल, देर आर द टू टाइप्स ऑफ द पीपल, एंड they are not having a same status all the time. They are not having a same status all the time. Like one person is having a surplus money and another is having a shortfall in money. Maybe having a maybe having a shortfall in a money on some other phase of life, or surplus in a money in a some other phase of life, that happens, right? So the thing is, if you have a shortfall then you have to borrow. So those person is having a surplus, they will actually lend you. ठीक है? तो इन ऑल टाइम, लाइक इफ यू हैव टू लुक एट अ हिस्टोरिकल, आज से कुछ 1000 साल पहले या 100 years और सम बैक, तो और अभी भी आप देखेंगे, सो देर आर द लाइक इन स्मॉल विलेजेस और रूरल लोकेशन पे, तो देर आर द पीपल दोज रिक्वायर्ड मनी, दे अप्रोच टू द, जो भी वहाँ पे जमींदार है या जहाँ पे कोई रिच पर्सन इज देयर इन दैट विलेज, वो उसके पास जाते हैं एंड देन आस्क कि भाई मुझे पैसा रिक्वायर्ड है, एंड देन रिच पर्सन जो है विल डू द क्रेडिट असेसमेंट. अगर अगर उसको लगता है कि भाई कुछ डिपॉजिट के अगेंस्ट में ही विल गिव दैट लैंडिंग, तो वो आपसे कुछ कोलेट्रल की वो डिमांड करेगा कि भाई आप ये कोलेट्रल दो, एंड देन म्यूचुअली दे डिसाइड कि भाई ये इंटरेस्ट रेट पे मैं इसको ये मनी जो है लैंड कर सकता हूँ. तो फिर ये वहाँ पे उनका प्रोसेस होता है. ठीक है? तो दैट इज हैपन इन अ स्मॉल स्केल. बट आप सोचिए कि नाउ यू आर गोइंग विद द एन अ लार्जर स्केल, मीन्स यू आर सिटिंग हियर एंड एज अ सपोज यू आर एज अ बोरोअर, एंड आपका जो लैंडर है वो बैठा हुआ है आपसे, देर आर द से thousands of kilometer away. How this thing can be happen? देन अब ये जो लैंडिंग प्रोसेस है या बोरोइंग प्रोसेस है, हाउ इज दैट हैपन?
ये कैसे होगा, एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? तो देर आर द लॉट्स ऑफ रीजन। पहली चीज कि इन द ओल्ड टाइम, जो पुराने समय में जो है, जो विलेजर है अपने उस विलेज का, या दो तीन विलेज के अंदर कोई एक, वहाँ पे कोई धनी आदमी है, रिच पर्सन है, दे आर अप्रोचिंग टू हिम एंड आस्किंग फॉर अ मनी टू लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोरोइंग कॉस्ट था, इन मेनी केसेस इट वाज सब्सटेंशियली हाई। ठीक है। दूसरा ये है कि द काइंड ऑफ अ कोलेट्रल दे डिपॉजिट और दे सबमिट अगेंस्ट द बोरोड कैपिटल, दैट वैल्यूएशन इज आल्सो टू मच, आई मीन वेरी, तो वो भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। थर्ड थिंग जो है कि रिस्क असेसमेंट, कि जो बंदा वहाँ पे, द पर्सन इज गोइंग टू बोरो मनी फ्रॉम अ, जो द जमींदार है या रिच पर्सन है, तो हाउ यू विल सेग्रीगेट कि भाई ये जो बोरोवर है, बोरोवर से सपोज टाइप ए बोरोवर, टाइप बी बोरोवर, टाइप सी, यू कांट से द ऑल टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऑल आर हैविंग द सेम क्रेडिट रिस्क, राइट? दे कैन हैव अ डिफरेंट क्रेडिट रिस्क, राइट? तो ये चीज को जो है, इसको असेस करना, इट इज अगेन अ चैलेंजिंग टास्क। फोर्थ थिंग ये है कि भाई टेनर, किसी को जो है जस्ट गोइंग फॉर अ 6 मंथ्स एंड अनदर गाय इज गोइंग फॉर अ 6 years, तो टेन्योर का जो है दैट इज आल्सो चैलेंजिंग। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो रिच पर्सन है, जो लेंडर है, जो जमींदार है, अब उसके पास उतना कैपिटल नहीं हो, और मे बी ही इज हैविंग अ कैपिटल ओनली अवेलेबल फॉर अ 1 year, उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट हो, तो देर इज अगेन ट्रबल फॉर द बोरोवर कि भाई दे रिक्वायर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, so how can they I mean accommodate with the only one lender, right? Or borrower can have a substantially high amount, like उसको वहाँ पे इंडस्ट्री डालना है, फैक्ट्री डालना है, then how is that local जमींदार और रिच पर्सन will meet his requirement? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इश्यूज वहाँ पे आपको अराइज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देन यू हैव टू बी एक्सपांड, एक्सपांड योर रीच, लाइक, सो आप सिर्फ विलेज तक ना रह के यू आर गोइंग टू सिटी, राइट? तो सिटी में आपने जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बैंक हो गया, या फिर आप उसको जो है सिटी से जो है यू आर गोइंग टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, because again there are the different type of the projects, their size of the projects, capital requirements, and there are the people those are borrowing money, so that borrowing money is having a different risk. Okay, one person is borrowing money for a like a, for a personal use, like a personal loan. Another is borrowing for the purpose of education. Then third person is looking the borrowing for a home loan, like buying a under construction property. Then another borrowing is for a like vehicle loan, right? So all these loans, and then another category is like a say jewelry loan, gold loan, right? So all these categories of borrowings are not having a, you can't say कि भाई all the type of the borrowings are having a equal risk, so having a different risk, so obviously the borrowers would like to pay the respective returns, will not go with the same interest for the like a personal loan and a home loan. So home loan जो है, that is now if you have to look at the current market, it is cost some around 8.5%, जबकि पर्सनल लोन अगर हम अनसिक्योर्ड बात करें इन जनरल, दैट इज सम अराउंड से 16 to 17%, करेक्ट? होम लोन का जो टेनोर है दैट इज अप टू से 30 years, while in the case of a personal loan the maximum tenure is available, if I'm not wrong, it is 5 years. तो ये सारे जो हैं यहाँ पे चीजें हैं, तो हाउ टू एकोमोडेट ऑल सच थिंग्स, तो इसके लिए जो है देर आर द सेवरल इंटरमीडियरीज कम इन द पिक्चर, ठीक है? चाहे वो आपके बैंक्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है? तो या आपकी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, सो व्हाट आर द रोल ऑफ दिस इंटरमीडियरीज, कि ये दे आर बेसिकली कनेक्टिंग, दे आर कनेक्टिंग द पीपल, like those are having a surplus money and those are having a requirement of money, or they are having a shortfall in money,
तो ये क्या है कि दे आर बेसिकली अ मीडियम ऑफ चैनलाइजिंग देम these requirements, right? तो बैंक क्या करता है, दे आर टेकिंग अ डिपॉजिट फ्रॉम द डिपॉजिटर्स, दोज आर हैविंग अ सरप्लस मनी, एंड वो पैसा जो है दे आर गोइंग फर्दर द पीपल दोज आर हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, वो आगे जाके उसको पैसा वो दे रहा है बैंक। यही हो रहा है बैंक के केस में। Same thing happen in the case of like a mutual funds. Mutual fund is basically pooling money from the various investors. तो अभी द म्यूचुअल फंड में क्या है कि नाउ दे सेट कि भाई यू कैन टेक 100 रुपीज आल्सो टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में दैट्स अ व्हीकल, दे आर बेसिकली collecting money from the investors, right? And then that pooling of money is going to be invest in a financial instruments. That instruments can be equity shares, debenture, bonds, or warrants, or preferential shares, or many others. It can be your gold, silver, metals, commodities, arbitration, many things, right? So mutual fund is basically a pooling money. तो ये जो है ये सारे intermediaries comes in the picture. अब now there are the several intermediaries. So how these intermediaries will operate efficiently, or will have a transparency, or will not be cheat to investors, or they have to penalize to investors. So what are the procedure here? So then your regulatory body comes in the picture. So for regulating capital market, एक चीज आप इसमें और समझ लीजिए, that will helping you a lot. Just देखिए, there are the two terms in general you will find. One is called a financial markets, and another is a capital market. Many times you will see कि सर दोनों एक ही तो चीज है, but there is a little bit difference. Financial market जो है, it's a basically having a all type of instruments, like a saving instruments भी है और investment instruments भी है. That is we called a financial market. ठीक है ना? फाइनेंशियल मार्केट में आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर आ गए, लाइक जैसे बैंक है, तो बैंक जो है दैट इज द पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट. इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. देन देर आर म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस फर्म्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रिट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और इनविट विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या आपके और भी है बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. करेक्ट? तो हम ये कह सकते हैं कि इफ यू आस्क मी द ओवरऑल मार्केट, देन आई से द ओवरऑल मार्केट इज बेसिकली कॉल्ड अ फाइनेंशियल मार्केट. लार्जर स्केल पे जो पूरा मार्केट है उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट. अब इन दैट फाइनेंशियल मार्केट इफ आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट कि भाई इफ द वर्किंग इज हैपनिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, या आपका रिसर्च फील्ड है, ठीक है ना, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गया, तो ये सब क्या है, दीज आर द ऑल इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड. तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट. उसको क्या बोला अपन ने? कैपिटल मार्केट. ठीक है? और इस कैपिटल मार्केट में इफ आई हैव टू ऐड लाइक इंश्योरेंस कंपनी ऐड कर दिया, इसमें हमने बैंक्स ऐड कर दिया, और भी जो वट एवर इट इज द जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, लाइक जैसे आपके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हो गया, ये है, तो ये सब
अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये पूरा जो मार्केट है, यू कैन से ओवरऑल मार्केट भी से द फाइनेंशियल मार्केट, और उसमें एक छोटा पार्ट है वो है कैपिटल मार्केट. तो दैट्स अ difference in a financial markets and a capital market. Okay, important part है because ये एक एक करके जो है, if you clear this terminology you will never, I mean, ever be confused, because सब मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है in my study also. uh, there are the several jargons or terms we use, and that terms basically belongs to that particular type of say instrument or activities, but having a more or less the same meaning which is the other term is having. Like for example, what is the your cost of capital? Say cost of capital, or you can say opportunity cost, or you can say the discounting rate, or you can say the your expected return, right, or required rate of return, or you can say the how much is the your total risk premium. All are having a same meaning, but it the uses or the terms is varies from the use, I mean, where we have to use, like opportunity cost use it in some other type of the explanation transactions, right? Similarly, the discounting rate is the some other place we use, or the expected rate of return we use in some other place, but all are having a more or less the same meaning. वही चीज आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वही आपका टोटल रिस्क प्रीमियम हो गया, वही आपका डिस्काउंटिंग रेट हो गया, वही आपका जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया. हाँ, चीजें सब वही है, बस ये है कि उनका यूजेस जो है दैट एक्चुअली चेंजेस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो वहां पे वो चेंजेस उसका हो जाता है. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है. अब इस ग्राफ में जो है नथिंग इज मच टू एक्सप्लेन. You can see that person on a horizontal we have like say years, the duration, and on a vertical we have a rupees. So that is the phase like just you a person born, and then so that is the phase which is going with the borrowing. And now once he got a job, like here, like he completed his education, so on that phase you can see uh, he's having a more cash outflow than the cash inflow. So here inherent assumption ये है कि भाई that education you have done which is you borrowed the capital. आपने क्या किया कि एजुकेशन के लिए लोन लिया है, अपना ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है जो भी है. So स्टार्टिंग में क्या होता है, when you got a job, but to meet the your education loan expenses and your own expenses, you required some borrowings, right? तो यहाँ पे ये डॉट 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 लाइन है which is basically showing the your borrowings. उसके बाद क्या होता है, as the time will pass you can see कि आपकी जो इनकम है, that is a straight line जो आपको दिख रहा है ये, that actually going to be now cross to the your borrowing. अब वो आपकी बोरोइंग से जो है वो ज्यादा हो जाती है आपकी इनकम. कैन यू सी हियर दैट डॉट 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 है ना, बेसिकली दैट इज योर बोरिंग लाइन. जो एक पूरी लाइफ के अंदर इफ यू कैन सी बोरिंग का जो चार्ट है ह्यूमन लाइफ का, वो कुछ ऐसा रहता है. ठीक है, तो इसमें तो स्टार्टिंग में जब एम्प्लॉयड एंड तो दैट इज हैविंग अ से टू पे द एजुकेशन लोन एंड होम से, अगर वो उसने फ्लैट ले लिया तो होम लोन भी जाएगा और व्हीकल लोन भी हो गया. सो these are type of the so more expenses than the income, but gradually क्या होगा, is income will rise and surpass the is the borrowing से ज्यादा हो जाएगा उसका income. And this way as his you know age is growing, his income is increasing, and जो उसका obligation है that is gradually falling. And when he reach to the age of a retirement, can you see here at the age of a retirement, so he is having at the peak of his income, right? And उसका जो obligation है, borrowings है, that is a I mean it's a say it quite low, right? इतने obligations नहीं बचते हैं because
अगर आप देखें कि होम लोन या कार लोन या फिर और भी जो है, तो वो तब तक वो चीजें उसकी कम हो चुकी होती हैं। तो दैट इज द स्टेज। नाउ वंस ही रिटायर्ड, राइट, उस कंडीशन में क्या होता है, हिज इनकम शार्पली फॉल, राइट। तो अब उसको क्या होगा, ही विल गेट पेंशन, या जो भी उसने कुछ अगर प्राइवेट सेगमेंट में तो इज डन सम एनपीएस और सम वेयर ही हैज डन द रिटायरमेंट प्लानिंग, तो वहां पे उसको जो है मंथली एन्युटी पेमेंट मीन्स मंथली उसको जो है पेंशन मिलने लगेगा। एंड आल्सो हैविंग सम यू कैन से दिस डॉट डॉट लाइन मीन्स some obligation here, it is can you see here this dot dot line, so that obligation like paying a say son or daughter marriage or some other like paying a home loan EMI or something, वो आपका जो है, तो या वो आपका that is a higher than the what you are having a income, राइट। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो आपका पूरा एक इनकम एंड स्पेंडिंग का लाइफ साइकिल है। सो द लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ सेविंग फॉर हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये जो एक बीच का फेज है, यहाँ पे आपकी इनकम इज हायर देन द स्पेंडिंग, एंड दैट टाइम यू हैव टू सेव मनी एंड इन्वेस्ट योर मनी, राइट। एंड पोस्ट रिटायरमेंट जो है आपका इनकम कम हो जाता है, बट योर ऑब्लिगेशंस जो है विच इज इन जनरल हायर, राइट, एंड विच इज कीप ऑन रिड्यूसिंग ग्रेजुअली, दैट इज द लाइफ साइकिल जो है आपका सेविंग फॉर हाउस होल्ड्स का। ओके, तो फाइनेंशियल असेट्स वर्सेस रियल असेट्स, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आना है, कंफर्म है। financial assets versus real assets. So assets can broadly be categorized as financial assets such as shares, debentures, bank deposits, public provident funds, mutual funds, investments, and others. And physical assets such as gold, diamonds, other precious metals, and real estate. Right. So फाइनेंशियल असेट्स में आपके हो गए बॉन्ड्स, डिबेंचर, बैंक डिपॉजिट्स, शेयर्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आपके फाइनेंशियल हो गए। फिजिकल में क्या है, वेयर यू कैन टच एंड फील, राइट, मतलब टेंजिबल्स जो होते हैं, जैसे आपके गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रेसियस मेटल्स है, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल असेट। तो एक क्वेश्चन आपका एक तरह से कंफर्म ही है जो आपको यहाँ से आना है। एंड वन क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम अ सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट कि सेविंग में जो है वो जनरली दे यूज अ गारंटेड, कि भाई आपको गारंटेड रिटर्न है, दैट्स अ सेविंग। एंड इन्वेस्टमेंट में जो है वो कभी भी नेवर एवर यूज द गारंटी वर्ड, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज हैविंग अ risk part, and risk reward system is there, means you take the risk and there is a possibility to get the uh, higher rewards. That's the funda of investments. Investment versus speculation, how is the investment and speculations different? See, investment and speculation activities are so intermingled that it is very difficult to distinguish and separate them. Generally आप if some you will ask someone or you will tell to someone कि uh, okay, I'm investing in a stock market, तो उसके दिमाग में क्या आता है, स्पेकुलेशन, कि अच्छा यार सर आप अच्छा ये बताओ यार, एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा मेरा, समथिंग लाइक क्वेश्चन दे आस्क यू, अच्छा एक महीने में कितना रिटर्न जनरेट कर दोगे, 10%, 10%, राइट, डेली का कितना कर दोगे, 5%, लाइक, so they are basically having a use confusion between a investment and speculation. So an attempt can be made to distinguish between speculation and investments on the basis of criteria like investment time horizon and the process of decision making, right. So financial transactions occur on a time continuum ranging micro milliseconds, microseconds, second, minutes, hour, day, week, month, year, decade, century, and perpetual time period, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो हैं that happens at different frequencies,
माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में भी हो रहे हैं, तो कई सेंचुरीज में भी हो रहे हैं. So there is a tendency to the describe the short-term activities as speculative in nature and long-term ownership of assets as a investment. तो ये अगर आप देखोगे अपने जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें भी they have defined कि if your money is kept for a 12 months or more than 12 months, it is treated as an investment. ठीक है. एंड लेस देन 12 मंथ है तो उसको उस पे जो गेन है दैट इज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना. और 12 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स है तो द गेन इज कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब अगर यू आर हैविंग अ इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट, तो वहां पे जो गेन है दैट इज कंसिडर एज अ स्पेकुलेटिव. उसको क्या दिया है गवर्नमेंट ने? स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. क्लियर? ओके. सो what is the dictionary meaning of the terms? Speculation is the forming of a theory or conjecture without firm evidence. Like आप क्या करते हो कि एक आप यू आर गोइंग विद सम projections कि यार that stock is going to be like we rise by 10% in the next say 3-4 hours or 5% in next 2 hours, something like you are going with the uh, forming of a theory or conjecture विदाउट फर्म एविडेंस. आपके पास कोई उसके लिए सॉलिड वो एविडेंस नहीं है, जस्ट हैविंग कि अच्छा यार अभी ऐसा कुछ न्यूज आने वाला है, या गवर्नमेंट इज गोइंग विद सो एंड सो पॉलिसी, या इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, या समथिंग समथिंग लाइक ऑन दैट बेसिस, या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला है, या फेड रेट, यूएस के अंदर फेड रेट में कुछ चेंजेस होने का है, समथिंग. So the activity of investment involves carrying out any exercise or process to determine the values of the asset and then buying the one whose value is determined to be higher than the current market price. Okay. So speculator basically have to focus on a news, and on that basis they try to encash in terms of a value, right? So they look at the price appreciation due to the some news or some events or some possibilities, or the rise of the demand for the product, or increasing the volume. So that is the activity considered as a speculation. Speculation having a short duration investment, short period investment, and hardly it is linked with the long term fundamentals. I mean, speculators are not keen or concerned about the long term fundamentals, right? So however, while the speculating, no cognizance is paid to the value of the asset. Here profit making seems to be the sole purpose without much consideration to the risk involved. तो स्पेकुलेशन में क्या है कि दे आर नॉट बी मच बी कंसर्न अबाउट कि भी हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व फॉर टेकिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ यू आर पुटिंग मनी इन द इंस्ट्रूमेंट, राइट. तो यहाँ पे मेन जो होता है कि भाई आई एम गोइंग टू टेक दैट मच, आई मीन गेटिंग द रिवॉर्ड आई एम गोइंग टू बी गेट बाय दिस सो एंड सो ट्रेड कॉल. So that is the thing happens in the speculation. And second thing, speculation is not going to be value paid to the value of the asset. Means that money is be put in a company share for a very short period. So hardly it is going to be a, I mean, utilizing by the company, or is somewhere it is going to be add, you know, so the economic growth, it is nowhere it is going to be at. It is basically just you put the money, you are doing the trade, and as you get the returns you exit. Okay, so it is not, it is having a hardly having any impact on the company. Company say company is going to be benefited by such thing. Hardly the company is getting the benefit of it. So know the investment objectives.
Investment objectives can be defined as investors' goals expressed in terms of risk, return and liquidity preferences. एक क्वेश्चन आपका इसमें से आएगा इन जनरल, लाइक कि भाई इन्वेस्टर्स के गोल्स क्या हैं. सो फर्स्ट दे हैव टू लुक द रिस्क, कि भाई मेरे जो गोल्स हैं उसमें हाउ मच इज द रिस्क, देन हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग द रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू बी लुक एट द लिक्विडिटी, कि भाई हाउ इज योर इन्वेस्टमेंट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ लिक्विड. राइट, आपने कहीं पे कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, ठीक है, द प्रॉपर्टी इज हैविंग अ पोटेंशियल कि भाई आपको साल का जो है वो 30% या रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे देगा, बट द लिक्विडिटी कंसर्न इज ट्रिमेंडसली हाई. इफ यू ट्राई टू सेल दैट प्रॉपर्टी, पता चला कि साहब वो प्रॉपर्टी आपका 2 साल से 3 साल तक सेल ही नहीं हुआ. So that liquidity preference is important. If you understand that how is the liquidity perspective, and second thing you have to look at the risk, कि how much is the risk is lying in a particular investment. So risk, return and liquidity, ये तीन जो है, these are the basically uh, things we have to be specified when you are going with the some goals of your investment. ठीक है, so the investor must be explained that the risk leads a return, means if you are taking the higher risk you can expect the better return. That is the general tendency of a in this financial market of say human behavior, कि as the risk increases their expected returns also increases. That you can understand by this way. If you are going to some nationalized bank for a bank deposit, so nationalized bank deposit is having a, I mean, you can say it's almost secure, similar to like government securities issued by the central government. Right. So there you can having a returns like bank FD returns for, so, suppose I say that for 1 year it is some around say 6.5%. Okay. As you increase the your risk level, like going with the mutual fund, liquid fund, so there you can expect a return some around 7.5 to 8%. Then you go with the hybrid debt fund or hybrid mutual fund. So there you have a combination of debt instruments as well as the equity. So their return as the your risk increases because equity comes in the picture. So their return you can expect some around 11%. And further you increase the your risk like going with the large cap mutual fund scheme, which is having a 80% large cap company stocks. There you can expect return some around say 14-15%, because now the risk also increases. If you move to the uh, mid cap based scheme in a mutual fund, where they are going to invest in a mid cap companies, which is a little more say riskier than the large cap and more volatile than a large cap, right? So there you can expect the returns some around say 17, 18 or 20%. And if you further increase your risk like investing in a small cap mutual fund scheme, those are going to be invest in a small cap companies, there your expected return also increases to in range of some around say 25 to 30% or 35%. If you going with the some micro cap companies or say junk kind of a stocks, right? So there you can have a returns expectations like 100% or 200% in a year, because there is a possibility that your amount may become a zero. So as your risk increases, your expected return from that investment also increases. That is the very, very, very important concept. That philosophy or that concept we called a risk return trade off. Means higher the risk we are taking, higher the returns we are expecting. That is the normal
common phenomena across the world. Clear? Okay. The return objectives may be simplified as follows. Acha, abhi now when we have to look at the returns, so what are the objective? One is like a capital preservation. There can be a like someone is looking ki no, I just want to preserve my capital, right? So that is the scenario arises when the someone reaches to a like having a decent wealth he's accumulated. Now he is not going to be a multiplied or manifold his amount, his wealth. He is going with the more on a preservative side. He just I have to preserve, and they prefer to invest in a secure instruments, right? In a debt instruments. So that is called a preservative approach. Okay, so especially like trust, there are the trust entities, or so they are going with the कैपिटल प्रिजर्वेशन कि भाई जो है हमारे पास लेट हम उसी को प्रिजर्व कर लें, 6-7% जो है वो गारंटेड रिटर्न मिल जाए, दैट्स फाइन. ओके, जैसे आपको से यू कैन से स्कूल्स में देर आर द स्कूल्स या कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप है, तो देर आर द मेनी एलोमेनाइज और द पीपल दोज एक्चुअली डू द प्रोविजन कि भाई आपको हम ये स्कॉलरशिप जो है दे यू विल गेट दैट स्कॉलरशिप फ्रॉम फॉर दैट दे हैव अ वन लंप सम से डोनेशन. ठीक है ना? तो वो जनरली ये चीज़ आपकी उसमें है. तो अब वहाँ पे क्या होता है कि दीज स्कूल या कॉलेजेस जो है कि भाई उनको बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देना है या कोई भी अवार्ड फंक्शन वगैरह है, तो दैट इज गोइंग बी अ लाइक अ रिकरिंग एक्टिविटीज. तो ऐसे में क्या है कि दे आर गिविंग दैट ऑन बेसिस ऑफ जो डोनेशन आया है उसको दे हैव टू पार्क इन सम बैंक एफडी में या कुछ ऐसा डिपॉजिट्स है जहाँ पे उनको दे विल गेट अ फिक्स रिटर्न, राइट? सो जो इंटरेस्ट आता है बाय दैट इंटरेस्ट दे आर गोइंग टू यूज फॉर द स्कॉलरशिप या कोई भी अवार्ड एक्टिविटी है, जैसे आपके नोबेल प्राइज हो गया, तो उसमें भी फंडा आपका वही चलता है. ठीक है, so that is the stage we called a capital preservation. Another is called a capital appreciation. So an appropriate investment object is for those who want their portfolio value to grow over a period of time and are prepared to take risk. ठीक है ना? ये capital appreciation comes in the picture when someone is looking कि यार let's my capital has to grow, right? They are looking at some set of expectation ki my capital has to grow by the rate like 15%, 20% or something, right? So expecting a higher returns and willing to take the risk for that कि ठीक है यार हम इसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, but we are expecting a higher returns, right? So अच्छा, ये जो रिस्क है दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि यार हाउ दिस रिस्क आल्सो दिस टर्म इज varies from individual to individual. See, risk is not remain the same for two different persons. For one person, risk may be higher. For another person, for the same instrument, risk may be lower. Right? How it is? So risk can be categorized in a two types. One is the systematic risk and another is the unsystematic risk. So systematic risk क्या है कि that is linked with the system, like जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गया, और देर इज सम you say the rise of inflation or rise of the interest rate or some kind of a taxations changes. तो ये सारा जो है that is the part of a systematic risk, means that everyone has to bear it. I mean you can't do an individual anything to reduce the systematic risk. वो सभी को bear करना है, whether आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी, whomsoever, वो सभी के लिए यूनिफॉर्मली आ रहा है. देन there is another is unsystematic risk. Unsystematic risk जो है that is basically linked with the management of a company, अगर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और if you are talking about an individual then you can say that individual knowledge, right?
उसकी अंडरस्टैंडिंग दैट विल एक्चुअली कैन ब्रिंग डाउन दैट अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर? जैसे लाइक सपोज आई एम इन्वेस्टिंग इन अ वाया थ्रू सम म्यूचुअल फंड स्कीम, or and I'm well versed with the how is that market moves, how this stock valuation happens, how the capital appreciation or correction in the market, what is the market ups and down cycle, how is the macroeconomic things happening, and what the impacts we can expect. If I am well versed with all these things and updated myself, then my unsystematic risk will be less. Correct? Because for the same unsystematic risk मेरा कम हो जाएगा. So or you can say the total risk जो है, which is the systematic risk and unsystematic risk, that I will and I myself an individual will experience less, while the other person who is not familiar with all these concepts may experience a higher risk. Clear? So that's a funda of a risk. So in a risk also be a depends with the risk जो है, it depends on an individual or a company how they are well versed with the concept. So unsystematic part of the risk can be reduced. Clear? Okay. Okay, I'm now going to invite participants. If they have any question, can unmute. Yes, Mr. Rohit, Gargi, Unni, Ishika, Naomi, Prashant, Mr. Shekhar. Any question till now? No, sir. No, no doubt. Okay. See, till now, I have completed some around 4 to 5 questions जो आपके आने वाले हैं some or other way in the exam. ठीक है, एक बार मैं आपको क्विकली आई हैव टू शो यू. देखिए आपको एक तो आपका इसी पे आ जाएगा जो NISM का सर्टिफिकेशन है. तो व्हाट इज एक एमसी का रोल क्या है इसमें, सेबी का रोल क्या है, व्हाट इज NISM क्या है, ARN नंबर हो गया, EUIN है. तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए. Yes, sir. ठीक है ना? एमसी का हो सकता है दे मैं आस्क यू द फुल फॉर्म ऑफ एमसी या फुल फॉर्म ऑफ सेबी, या फिर NISM का जो है हु इज द सर्टिफिकेशन इशूइंग अथॉरिटी. ठीक है, उस पे आ गया. या फिर सर्टिफिकेशन का वैलिडिटी कितना है उस पे आ गया. व्हाट इज द आई मीन एज क्राइटेरिया, कुछ भी मतलब जो है वो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है. नाउ आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. हाउ इज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट. ठीक है, गारंटेड है या देर इज अ नो गारंटी. ठीक है, तो वो चीज आपका उसके ऊपर एक क्वेश्चन हो गया. ओके, देन एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा फाइनेंशियल असेट्स वर्सेस रियल असेट्स के ऊपर. ठीक है, व्हाट आर द आई मीन दे विल गिव यू द वेरियस टाइप ऑफ द असेट्स एंड आस्क यू कि टेल मी विच इज द फाइनेंशियल असेट्स एंड विच इज द रियल असेट्स. ओके, देन आपका जो है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन. ये भी आपका एक क्वेश्चन बना देता है कि भाई हाउ इज इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट देन द स्पेकुलेशन एक्टिविटी. सो बी वेरी वेरी क्लियर एंड स्पेशली अगर प्रैक्टिकल perspective से if you ask me, that is we must be clear that because most of the market people in this market they are taking like अच्छा स्टॉक मार्केट मीन्स स्पेकुलेशन. अच्छा यार कितना पैसा उसमें हम छाप लेते हैं, कितना पैसा बन जाएगा, हाउ द मनी इज मल्टीप्लाइड, कैन वी मेक मनी लाइक 3-4 गुना हो जाएगा साल भर में. सर कितना 3 महीने में डबल कर दोगे, समथिंग लाइक दे आर जैसे कोई मजाक लगा रखा है. सो दैट इज द बेसिकली कॉल्ड स्पेकुलेशन एंड देर आर द एंड नथिंग इज आई मीन इट इज they can also be supported by the evidence, like they can show you the stocks which is like कि जिसका
200% या 300% साल का रिटर्न है, ठीक है, वो आपको ऐसा भी दिखा देंगे कि लुक एट दिस, बट इफ यू हैव टू गो विद द वाइजली एंड अंडरस्टैंड द कोर concepts, right? How is the stock selection happens? How is the risk is lying? What is the probability of finding a such type of the stocks? What is the probability of a failure of the such stocks? And what is the your aggregate returns in a longer period? If you have to incorporate all such things in your calculation, then you will see that it is next to impossible to manifold your money. लाइक जैसे हम बात करें कि नहीं साहब मैंने तो 3 गुना कर लिया, 4 गुना कर लिया साल भर में, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। द वर्ल्ड जो रिचेस्ट इन्वेस्टर है और से रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे वॉन्ट आल्सो एबल टू डू दैट। जब वो ही नहीं कर पा रहे वाइल दे हैव यूज रिसोर्सेज, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई आप इसमें, बिकॉज दैट इज द रियलिटी। सी इफ one thing you remember, if someone wants to make a significant wealth, then the wealth creation happens, the first thing which can create a significant wealth, which is by the way of a entrepreneurship। आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए। सी आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना मिस, समथिंग न्यू आइडिया जनरेशन हैपन, सम न्यू थिंग्स यू लॉन्च इन द मार्केट and you expand it, that will create a substantial wealth. So you can see the world richest person, Elon Musk, their company, Space X, Tesla, Starlink. These are the part of uh, you know Elon Musk group companies. ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर द, दे आर ऑन अ हाईली ऑन अ इनोवेशन। और भी आप देखेंगे, अगर 1000 जो हैं, 1000 यू कैन टेक द फोर्ब्स रिचेस्ट पर्सन, तो इसमें जो है यू विल फाइंड द पीपल क्रिएटेड वेल्थ बाय फर्स्ट इज इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड सेकंड बाय द इन्वेस्टमेंट, right? So they make the money by investments, they see the compounding of their money, and this way they have created wealth. None of the person you will see who has created the wealth by the salaried income. That is the somewhere you can we tested it. If you have to look at the 1000 people of the Forbes list, the people have created wealth by by entrepreneurship, and another is by investment। ओके, तो ये हो गया आपका। Okay, so we already have a 4 to 5 questions discussed. Now, estimating the required rate of return, that actually comes in the picture. Uh, how we are estimating कि how much return we are expecting, uh, or say how we compensate our risk in terms of a return, right? That is the challenge you can face in the market. So the basic criteria is, first you have to take the your risk free rate कि भाई मार्केट में रिस्क फ्री रेट क्या है। सो रिस्क फ्री रेट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम अ कंट्री टू कंट्री, राइट? अभी जैसे अपने इंडिया में है, यहाँ पे रिस्क फ्री रेट which is some around say 6.5%. What does it mean? It means that if you will not do anything and you just have to park money with a bank FD or government, central government security, you will get a nearly 6.5% return, right? That you can check by visiting on say you can just have to visit on RBI website also. Let me show you. RBI. So here policy rates. So that's a repo rate.
Bank rate 6.75. So here government securities market, you have a 6.79 is a coupon, which the yield is 6.77. That is the right. So means if you will do nothing, you can just put your money in this instrument, you will get that much return. That is we call the risk-free rate. Clear? Okay. Now the next thing is a risk premium. Okay. So if I start a project, right? So how much return I will expect? So from that project, I can say the expected return, which is equivalent to risk-free rate or risk-free return, है ना? Risk-free return plus risk premium. ठीक है भाई, आई एम स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, तो भाई जितना अभी 6.5% तो जो है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क आई एम गेटिंग अ 6.5%, तो ये तो मेरा रिस्क फ्री रिटर्न हो गया. और नाउ आई हैव टू चार्ज एडिशनल रिटर्न बेस्ड ऑन द रिस्क, दैट इज कॉल्ड अ रिस्क प्रीमियम. तो मान लीजिए कि यू आर गोइंग टू से स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन, residential construction, construction of so there, if you have to look at uh, our Indian market and metro cities, residential construction is having some around 4 to 5% risk premium. 4 to 5% is the risk premium. If you are going to put the large cap stocks, in a mutual fund, right, you will having a risk premium which is some around, you can say, 6 to 8%. If you are going with the mid cap stocks, MF, then you can see the returns which is some around, say, 10 to 12%. That is a risk premium. What is I'm saying? It is a risk premium, right? Then a small cap, your risk premium will be some around, say, 15, say 20%, okay, and so on. So as the your risk is increasing, your risk premium is also increases. So when you talk about uh, say the expected return, so your expected return here I can say, let me put this risk premium for that, I think easy to understand for you. Risk premium for residential construction, for large cap stocks, for mid cap stocks, mutual fund investments, risk premium for small cap mutual fund investments, right? Now we talk about expected return. So my expected return will be risk free rate plus, right? So let me freeze because I'm going to repeatedly use and take the your risk premium. So here it is 4 to 5%. So I can just take a 4.5%. So in case of a real estate construction, your risk returns, or you can say the residential
कंस्ट्रक्शन की जगह पे I have to put a property, residential property investment, right? So it is 11%. If you have to look at the large cap, so take the risk-free rate plus risk premium for a large cap stocks, it is take a nearly 7%. Then for you can take a mid cap, which is 10 to 12%. So take the in mid of that, which is 11%. So you can sum around 17.5% in a mid cap. And for risk expected return for the say small cap, it is going 15 say 20% का average ले लेते हैं 17.50 percentage, which is so 24%. So that is the risk premium for the various type of investments based on the how is the risk is involved, and on that basis I can say what is the my expected return. These are the my expected returns for the various categories of the my investments. Higher the risk, more returns you are expecting. Clear? तो एक आपका क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका इस पे आ जाएगा कि दे विल टेल यू कि दैट इज योर रिस्क फ्री रेट, right? And that is much we are expecting a risk premium. So what is the expected return? So in that case, you have to calculate a expected return. Expected return is equivalent to risk-free rate plus risk premium. Okay. That further I have to, you can say, elaborate. इसमें आप क्या कर सकते हो? Expected return, which is a risk-free rate. And how can I write this risk premium? I can say beta into market risk premium. What is the beta? Beta is basically a sensitivity measure. ठीक है ना? How is the sensitivity measure means? Like there is a stock and there is a Sensex. So how is a stock returns, uh, moves with respect to the moves of movement in the market, right? So that is actually reflected by a beta. It is, you can say, like suppose uh, there is a student, one student, and there is a class. So as and when the class teacher gives some assignment, so suppose there is a 5% rise in a marks of a class overall class, but that particular student marks increases by a 10%, right? So it means the beta of that student is 2. So means that student is twice aggressive than the class other class students on aggregate. So uh, if the class students underperform by 5%, so that student will underperform by 10%. Same thing happen in case of a stock. If my BSE Sensex or index will increase by 2% and my beta value assume it is 1.5, in that case my stock will increase by 2 into 1.5 means 3%. Okay, and vice versa. If my Sensex or you can say market fall by 2% and my beta value for stock is 1.5, that means my stock will fall by 2 into 1.5 is equivalent to 3. So it's a 3%, right? So beta is also called a sensitivity multiplier. Uh, Beta is also called a sensitivity multiplier. Okay, beta value value
ranges from minus infinite to plus infinite, right? So that is the range of beta कि भाई minus infinite से लेके plus infinite. अच्छा, beta is a uh, okay, if beta value is greater than 1, right, then stock or asset is called a aggressive asset. ठीक है, बीटा का वैल्यू अगर इट्स अबोव 1, देन योर स्टॉक या जो आपका असेट है दैट इज कंसिडर एज एन एग्रेसिव असेट. ओके, अगर बीटा वैल्यू which is which is greater than 0 but it is less than 1, right, getting a point. एक से कम है और 0 से ज्यादा है, लाइक 0.5 हो गया, 0.25 है, 0.75 है, 0.8 है, 0.9, then stock is called a defensive asset or stock. That I will explain you why this defensive or why it is aggressive. Just let me beta value, if it is less than 0, then stock is called contrarian asset. Contrarian means opposite. आपका market is going on upside and your company stock is going downside. Your investment value is going downside, right? Opposite. That's a contrarian. Okay. And if beta value is equivalent to 1, then stock is called a market asset or right. So then the stock is called a market asset or portfolio. How it is, let's understand this beta. We will do the exercise later how to calculate beta, that will come in other chapters. लेकिन आप एक बार ये समझ लीजिए कि बीटा जो है वो फंडा क्या है. कि जैसे ये मार्केट है, मार्केट हम क्या बोलते हैं, इस लाइक सेंसेक्स हो गया ना, आप इसको मार्केट बोल दीजिए या you can say it's a sensex. Sensex is a means market means which is representing the sentiments of overall जो है मार्केट का, उसको हम बोलते हैं मार्केट. क्योंकि सेंसेक्स है विच इज हैविंग 30 स्टॉक्स और दीज आर द 30 स्टॉक्स फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं एंड ऑल दीज कंपनीज आर फ्रॉम द लार्ज कैप. आपकी फार्मा से कंपनीज हैं, देर आर फ्रॉम रियल एस्टेट, दे आर फ्रॉम द बैंकिंग, दे आर फ्रॉम द आपके से फार्मा आपके जो है कैपिटल गुड्स से है, ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से है, बैंकिंग से है. सो देर आर द टोटल 30 कंपनीज विच इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अ मार्केट.
So you can say market or Sensex or Nifty. So Nifty 50 वो basically Nifty जो है NSE, they have a index, market index, that is called a Nifty 50. Okay, तो यहाँ पे सेंसेक्स को जो है सेंसेक्स बोल दीजिए या सेंसेक्स 30. So Sensex 30 is having a 30 stocks portfolio, and Nifty, जिसको that also we called a Nifty 50, right, which is having a 50 stocks portfolio, right. So they are basically considering as a market because they are showing the sentiments of the market. So what I'm going to say here is, if my beta value is, assume it is a 1, right. So here is market, and here I say the my stock, right. And now I'm putting the market returns, right. Ki I say here I put the period. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and ये 10. तो मार्केट का रिटर्न जो है 0.5 है, 1%, 5%, 10%, -4%, -3%, 4%, 8%, 1%, -1%. Okay, so these are the different, I mean say I just assume these are the different months, and this is the way the market has delivered returns. ये market ने जो है आपके returns deliver किया है. If my beta value is 1, right, in that scenario my stock or my investment will deliver return on what way? So you take the market return, multiply with the my beta. Okay, so my stock will deliver return like market is 0.5%, so stock also deliver 0.5, market is 1%, so 1% multiply with 1, it comes to 1%. Then 5% multiply with the 1, you will get a 5%, and the same way others. So because beta is a multiplier, it's a sensitivity multiplier, so you take the market return, multiply with the beta of a stock, right, you will get a movement of our stock or portfolio. Okay, so here when their beta is 1, what you can say, the stock is called a market portfolio because stock is exactly following like a similar to market. Now if I have to make the my beta value to say 2, in that case what happens, my now market is increasing or decreasing, my stock is going twice by the doubling. So if it is market is increasing or whatever, so my stock is going double speed, right. So that is we called aggressive. If beta value is greater than 1, means it's a aggressive asset or aggressive portfolio or aggressive stock. If beta value is -5, it means now the market is whatever the happening in the market, my stock or portfolio is going on a just opposite because beta value is negative. If beta value is less than 0, then stock is called a contrarian asset. Contrarian means opposite. If market is going down, like in this case, it is -4%. But in that case, my stock increased by 20%. Market fall by 4%, right? But my stock is increased by 20%. Here market increased by 10%, my stock fall by 50% because beta value is negative. So here we can say it's a contrarian asset.
Okay. Now beta value is in between 0 and 1, means suppose beta value is 0.25. In that scenario, you can see as the market is a movement or stock man, so stock is moving with the less value. See, if market increase by 0.5%, my stock is increased by zero point 0.5 into 0.25, it comes to a 0.13%. If market fall by 4%, my stock is falling by minus 4 into 0.25, it means it's a 1%. If market is increased by 8%, then my stock is actually increased by 8% into 0.25, means it's a only 2%. So this is the way you can see how is my stock is linked with the market with the help of a beta. I hope you understand the concept of a beta. So beta is a sensitivity measure, right? And when you calculate the expected return, which is actually equivalent to risk-free rate plus beta into market risk premium. So if you ask me what is the market risk premium, so market risk premium is equivalent to return of the market minus risk free return. That is called a market risk premium. Is कि भाई जो market है, how much it is generating more return than the risk free rate. Suppose my market is delivering return is 15% and risk free rate which is there is 6.5. So 15 minus 6.5, it comes to 8.5, means market risk premium is 8.5. मार्केट मुझे 8.5% रिस्क प्रीमियम दे रहा है. इफ यू आर टेकिंग द रिस्क विच इज इन लाइन विद द मार्केट, so you will get a 8.5% more return than the risk free rate. That is the interpretation. Okay, so that's a market risk premium. Okay, now you have to be put this equation here. So what will be the uh, your other equation? So you can say expected return is equivalent to risk free rate plus beta into market risk premium. So market risk premium that you have to be take a this equation, this figure I have to be. So return of the market minus risk free rate multiply with a beta plus risk free rate is equivalent to expected return. Means by investing in any asset or stock or a portfolio, how much return I'm expecting, which is equivalent to, which is you can say, now you can say risk free rate I am presenting by a symbol RF plus beta. So there is a symbol available in our here. This is the symbol you can say, that is we call the beta, right? Beta, right? And multiple beta, then multiplying with a return of the market, so that is the RM, market return, then risk free rate, which is RF, right? And that equation is called the expected return, which is we representing by ERI. I is suppose your instrument, then ERI is equivalent to it is equivalent to RF plus beta into RM minus R. Clear? That is the equation. This model we called a CAPM. That equation model is called a capital
asset pricing model. CAPA model means capital asset pricing model, and this ERI, it is called a expected return or opportunity cost or required rate of return. Right? The meaning is same, right? If I'm investing, then I'm expecting that much return from my investment. So that is my expectation. Okay, whether this expectation will be fulfilled or not fulfilled, that is a separate thing, but that is what we said, expected return. Okay, so this is very, very important thing. CAPA model, that capital asset pricing model, is used in case of a valuation using a discounted cash flow method, right? That also used for getting the say cost of capital, right? So this expected return also called a let me or say cost of capital, right? The meaning is same. Okay, so yes, let me check if any question from the participant end. Okay, now let me take your question if you have any doubt till now. See, you will get two questions from this thing, CAPM, right? So you have to calculate expected returns, right? They will provide you a risk-free rate, maybe beta or market returns. Then you have to calculate the cost of capital or say required rate of return or opportunity cost or expected return, meaning is the same, right? That will ask you the to calculate. एक क्वेश्चन आपका एक इस पे होगा, एक आपका बीटा के ऊपर होगा, right? So you can expect some around 2 to 3 questions from this one. Okay, now I'm anyone having any question, feel free to ask. Can unmute yourself. हेलो सर। Yeah, please. सर ये एक्सेल फाइल आप शेयर करोगे? हाँ, मैं काम करता हूँ. आई एम जस्ट सेविंग दैट एक्सेल फाइल. वैसे तो आपको क्या है, सी यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग. ओके ठीक है, आपको ये पूरा जो सेशन है इसका रिकॉर्डिंग रहेगा. यू विल आई एम आल्सो गोइंग टू बी सेव दिस एक्सेल फाइल. बट वही है कि ये सब क्या है कि एक तरह से काइंड ऑफ अ रफ वर्क है ये. ठीक है, बट यस, आई एम सेविंग दिस वन एंड विल शेयर विथ यू. ठीक है ना, इसको मैं सेव कर देता हूँ. इज दैट कंसेप्ट क्लियर और नॉट? यस क्लियर हुआ? प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाँ, यस सर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हाँ देखिए, एक चीज मैं कहता हूँ आपको. फाइन, सी आई डिड माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल. ठीक है, एंड देन आई मूव टू फाइनेंस फील्ड. जो चीज सबसे ज्यादा मुझे इस फाइनेंस का अट्रैक्टिव लगता है वो है इसका रिस्क रिवॉर्ड. मतलब इसका जो रिवॉर्ड देने का पोटेंशियल है, दैट इज सब सिग्निफिकेंटली हाई. आई मीन इट्स सब्सटेंशियली हाई. आपने कहा कि मुझे कोशिश करना पड़ेगा, आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू लर्न. लेकिन आपको ये जो रिवॉर्ड है ना इसका, दैट लर्निंग दैट स्किल्स, ये आपको टिल द एंड, आई मीन लास्ट एज तक आपके वो जो है वो रिवॉर्ड देगा. वो स्किल्स आपको हेल्प करेगा.
दैट इज द एक्चुअली जो है फाइनेंस का बेनिफिट है। सीखने में may will take a time because I also did a triple post graduation, then having a other certifications, ये वो, I mean I was reading till the age of 35 की एज तक तो मेरा जो है along with the job, but जैसे भी है मतलब आपने वो सब जो आपका स्टडी वगैरह जो है वो साथ में आप करते ही रहते थे, समथिंग समथिंग यू आर स्टडी, राइट। लेकिन मेरा ये था कि यार दैट नॉलेज ना, दैट विल हेल्पिंग मी थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये फाइनेंस के साथ में बहुत अच्छा है कि आपकी जो लर्निंग है वो आपको कई मैनीफोल्ड रिटर्न्स आपको इन फ्यूचर में देके जाती है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ईशिका, नियोमी, प्रशांत, रोहित, शेखर, मुन्नी, नो क्वेश्चन, नो डाउट, ऑल गुड? Hello, sir. या प्लीज गो अहेड। Sir, please repeating this beta definition only. Who is asking here? I'm Honey. Okay, honey. See, beta is a beta is a sensitivity multiplier. How do you say the sensitivity क्या होता है? Like जैसे एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब मुझे वाइफ का नेचर जो है वो हस्बैंड के नेचर के पर्सपेक्टिव में आई हैव टू चेक, ठीक है ना। मैंने वाइफ का नेचर जो है उसको मान लिया मार्केट, है ना। अब अगर सपोज कीजिए कि हस्बैंड का जो बीटा वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब अगर वाइफ ने कहा यस तो हस्बैंड भी जो है वो बोलेगा यस। वाइफ ने कहा नो तो हस्बैंड भी बोलेगा नो। वाइफ ने कहा यस यस डबल बार बोला यस, तो हस्बैंड भी बोलेगा यस यस, क्योंकि यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब अगर बीटा का वैल्यू -1 है, तो अगर वाइफ ने कहा यस तो हस्बैंड क्या बोलेगा, माइनस यस मीन्स नो, अपोजिट। वाइफ ने कहा नो तो हस्बैंड जो है उसका यस अपोजिट हो गया, अगर बीटा का वैल्यू -1 है। अगर बीटा का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है तो उसमें क्या होता है, दैट इज बी कॉल्ड अ कंजर्वेटिव। ये क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव जो है। इफ बीटा वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1 तो दैट इज अ डिफेंसिव, आप बोल दीजिए, और कंजर्वेटिव है। मीन्स उस आपसे मूवमेंट नहीं देगा उतना, ना तो वो डिक्लाइन होगा ना उतना वो राइज करेगा, ठीक है। तो जैसे बीटा का वैल्यू 0.25 है, तो मार्केट आधा टका बढ़ा तो मेरा मार्क स्टॉक जो है वो बेसिकली 0.5 इंटू 0.25 मीन्स इट इज 0.13% इंक्रीज हुआ, बट नॉट बाय द सेम लाइक अ मार्केट, 0.13% ही हुआ, राइट। और अगर डिक्रीज हुआ मार्केट विच इज लाइक अ -4%, तो माई स्टॉक इज नॉट फॉल टू एग्जैक्टली -4%। कितना डाउन डाउन गया, -4 इंटू 0.25 विच इज -1%। so that is we called a stock or portfolio or my asset which is a defensive or conservative, ठीक है। अगर बीटा का वैल्यू मेरा 0 से 1 के बीच में है, बीटा इज अ बेसिकली सेंसिटिव मेजर कि भाई कितना आपका पोर्टफोलियो या असेट है, इन्वेस्टमेंट है, हाउ दैट पोर्टफोलियो इज सेंसिटिव विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट। अभी जैसे एक आपने चीज देखा ना कि देयर वाज इलेक्शन इन यूएस व्हेन द डोनाल्ड ट्रम्प पार्टी, आई थिंक रिपब्लिक पार्टी ना, दैट पार्टी वन। तो इलोन मस्क का जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट दैट पोर्टफोलियो शूट अप, आई मीन इट हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ठीक है। मार्केट उतना नहीं बढ़ा लेकिन जो है मस्क का जो पोर्टफोलियो है दैट इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो यू कैन से
कि भाई मस्क का पोर्टफोलियो इज अ एग्रेसिव, राइट, देन द मार्केट, क्योंकि इस ये जो हुआ, और अगर यही सपोज करो कि इफ ट्रम्प लॉस्ट दैट इलेक्शन, तो आपका मस्क का पोर्टफोलियो जो है वो विल गो डाउन more than the market. That happens, right? Any other question? So the question will come in which sense? In the sense that they will give us a case study, or No, there is no as such case study. uh, In a mutual fund examination, they are having a MCQs type of the questions. All questions will have a same 1 mark each, right? There is no case study. There is no negative marking, right? But if you have to see the now the course content and the question which they ask, so I'm not sure, but some around the passing rate is in between 15 to 20%. मतलब every 5 people appear, one candidate clear the exam. उतना इन्होंने इसको डिफिकल्ट किया है. also like in mutual fund, we usually say that we don't generalize an expected return. So, matlab, why are we saying that the expected return will be so much? नहीं, that is the something which is I'm expecting from my investment. Okay. Mutual fund में जो है, we are not, I mean, investment, whenever we use the word investment, whether you are going through the mutual fund route or you are going with the any other route, we are not giving the guarantee word. We are not using the guarantee word, right? I can Yeah. expect the some return. Other जो है, they can also tell you कि we can expect or there is a possibility to get that much return. That is fine. But someone say the word is guaranteed, you will get a guaranteed 20% return, then it is wrong. Because investment में कभी भी guarantee नहीं आएगा. That's a thing which I told you. I explained. Is that clear? Yeah. Max. ठीक है, आप अपने see you construct a portfolio, obviously you will have some return expectations ना. अगर आपका portfolio sectorial है, you have only sector specific stocks, you might have a higher expectations. ठीक है, and obviously you have a because more risk and more rewards, expectations will be there, and there is no surety कि भाई as your expectation that expectation will be meet. नहीं हो, जरूरी नहीं कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन है और वो एक्सपेक्टेशन आपको डिलीवर हो गया. हो सकता है the things will not go in as per your expectations. That is a possibility. बट आप जब उसमें ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स भी आप ज्यादा देखोगे. दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, दैट्स अ नॉर्मल criteria of risk reward. Clear? And the returns which like in this G column we have written G8 like 11%, 17%. So That uh, is something like I try to match with the market में कि भाई अगर आप okay. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट सम अराउंड 4 to 5% risk premium. That is I mentioned the risk premium for. Okay. ना आप चाहे तो मैं, ठीक है, you can, if you want I can put this risk premium part here. Risk premium, okay, that is the वो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें. Okay, so we are saying that residential property will give a return of 4 to 5%. दैट इज द रिस्क प्रीमियम. अब उसके ऊपर जो है आपको ऐड Okay. करना पड़ेगा रिस्क फ्री रेट, कि भाई विदाउट डूइंग एनीथिंग Yeah. Okay. अगर मुझे 6.5% मिल रहा है, ठीक है ना, तो अब मैं रिस्क ले रहा हूं तो ऑब्वियसली आई विल चार्ज मोर देन 6.5%, क्योंकि 6.5% तो मुझे कुछ किए बिना ही मिल रहा है. Okay. एंड दैट इज नॉट द सेम टू एवरी अदर कंट्रीज. जैसे यूएस है, वहां पे आपको रिस्क फ्री रेट इज सम अराउंड 1.5% है. जापान में तो
रिस्क फ्री रेट जो है वो नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है ना। ब्राजील में दैट मे बी दे हैव सम 7-8%, चाइना में भी कुछ ऐसा है। तो इमर्जिंग मार्केट में जनरली यू विल सी द रिस्क फ्री रेट इज सम अराउंड से 6 to 8% के आसपास, या 5 to 8% के बीच में रहेगा, ठीक है ना। ये आपको है। और यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे लाइक नीदरलैंड, और नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तो वहाँ पे आपको रिस्क फ्री रेट इज अगेन सेम 0.5 या 1%, इट्स लाइक दैट। बिकॉज दिस रिस्क फ्री रेट ना, इट इज लिंक विद द इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन वहां पे कम है तो ऑब्वियसली यस सर। आपका जो है रिस्क फ्री रेट, अल्टीमेटली आपको किस चीज का मिल रहा है ये रिस्क फ्री रेट, इट्स बेसिकली कंपनसेटिंग योर इन्फ्लेशन। अभी आरबी अगर आप जाके किसी आरबीआई के बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाके आप करते हैं सेविंग, तो वो क्या बोल रहा है कि ठीक है भाई, यू हैव सेव्ड 100 रुपी, हम 1 साल के बाद आपको 106 रुपी 50 पैसा दे देंगे। बट तब तक क्या है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है, कमोडिटी है, जो भी है, वो ओवर एन एवरेज वो आपका 6.5% भी उसका प्राइस भी बढ़ गया, तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो दैट इज मोर एंड लेस सेम ही रहा। So can we call risk-free rate as fixed deposit rate? Let's say 3-year fixed deposit or 5-year fixed deposit. See that Or should we call? it is close to that one, but not exactly, because uh, to understand the risk-free rate, see, it depends. I mean, who will take the what, which one? Some people or some analysts take 5 years 5 years government securities bond yield as a risk-free rate, right? Some people take a 10 years government securities bond yield as a risk-free rate. So that मैं 5 साल का लूंगा कि 10 साल का मैं गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसका यील्ड को मैं आई विल टेक अ रिस्क फ्री रेट, या 15 साल का जो है या 20 साल का जो मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसका यील्ड को आई विल टेक अ रिस्क फ्री रेट। इट आल्सो मैटर बेस्ड ऑन द योर इन्वेस्टमेंट ओरिजन, कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन क्या है, आप प्लान कर रहे हो साहब साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, इन दैट केस यू टेक लाइक 2-3 years जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो यील्ड है, दैट वन यू कैन कंसीडर एज अ रिस्क फ्री रेट। इट इज सिमिलर टू लाइक जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो एंड यू आर Yeah. डूइंग अ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो देन आप क्या करोगे कि साहब इंट्राडे ट्रेड हो रहा है, सो यू जस्ट हैव टू सीक लुक एट द लास्ट 1 आवर का क्या चार्ट पैटर्न है, ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू टेक द कॉल। आप उसके लिए पूरे आप साल भर का चार्ट, यू डोंट हैव टू बी लुक एट द लास्ट Yeah, 1 year yeah. चार्ट, यू जस्ट Understood. हैव टू लुक एट द ओनली 1 hour or 2 hour चार्ट, right? And if you are going with the swing trading like a 3 days या 5 days या something, then you have to look at say last 1 week chart ना। तो ये सारी चीजें क्या है, सी यही तो इन्वेस्टमेंट फील्ड का, दैट इज द फ्लेवर हियर। Yeah. नथिंग इज फिक्स, it is everything is relative, it is everything is like you are understanding आपका सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी इसके अंदर जो है वो फिक्स नहीं है, इट इज एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है ना। ये जैसे मैंने कहा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अब इसके ऊपर भी सारे काफी सारे क्वेश्चंस यू कैन रेज कि सर दिस इज लिंक विद द विच प्रॉपर्टी, सर ये मेट्रो का अलग रहेगा, सर टायर 2 सिटीज में देयर विल बी डिफरेंट सिनारियो, टायर 3 में देयर विल बी डिफरेंट सिनारियो, विलेजेस में अलग रहेगा, यस करेक्ट। तो दैट इज व्हाट वी हैव टेकन लाइक समथिंग लाइक स्टैंडर्ड, कि भाई हाँ मेट्रो सिटीज, एज आई सेड दैट टाइम आल्सो, कि मेट्रो सिटी का हमने एक एवरेज पकड़ा है मार्केट का, बट नथिंग। अब मार्केट में भी जो है यू विल सी इन मुंबई द रेट इज डिफरेंट देन द रिस्क प्रीमियम इन बैंगलोर इज डिफरेंट एंड हैदराबाद एंड चेन्नई और नोएडा, गुड़गांव, you will find a variation. So in that investment field nothing is fixed, right? That's why this is a so interesting one, and there are the people, experts people are required, and they value your expertise. So it takes time to get the expertise knowledge,
बट मार्केट वैल्यूड इट, मार्केट आपको उसका वैल्यू भी देता है। क्लियर? Yeah. ओके, चलिए। आई थिंक देर इज नो अदर क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट एंड। ओके, so same thing is explained। अच्छा, एक इसमें जो है नॉमिनल रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्फ्लेशन, राइट, इस पे एक क्वेश्चन आपका मोटा मोटा आ जाएगा। So let me explain you what is the, see, this is the NRR, that is called a nominal rate of return, which is equivalent to 1 plus real rate of return into 1 plus expected rate of inflation minus 1। तो इसमें फंडा क्या है, that you can understand by this। देखिए, सी मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, दैट आई से द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट। तो सी अगेन यहाँ भी क्या होता है कि अभी जो बेसिक अजम्पशन है कि वी आर टेकिंग अ, जो आरबीआई इज पब्लिशिंग का इन्फ्लेशन डेटा है कि भाई इतना है, वी आर गोइंग विद दैट इन्फ्लेशन। बट व्हेन यू आर लुक एट द योर स्टॉक और योर इन्वेस्टमेंट्स, और तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आप, आरबीआई ने जो दिया है मतलब एवरेज इन्फ्लेशन, बिकॉज अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वेयर इज दैट कंपनी और वेयर इज दैट इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग, यू हैव टू बी लुक एट द इन्फ्लेशन ऑफ that geography, that location, that you can understand. Someone who is living in a Mumbai and another guy who is living in a some village, like in a Maharashtra, there is some village, take on a Vidarbh side, which is a more on a agriculture based. In Mumbai, where the people more, I mean, consumption or activities related to the service, like here people are having flats on rent, you are taking vehicles, so in a vehicle you are taking petrol, diesel, gas, right, or there people are employed doing a job, right, then there are the electricity, that power, or right, then so medical, so pharmacy, so all these are, if you have to look at, these are having a over an average inflation, or the growth is say 9 to 10% year over year। और say school, kids school fees, ट्यूशन फीस, कोचिंग क्लासेस, तो मोटा मोटा जो है वो आपको 8 से 10% का यहाँ पे इन्फ्लेशन मुंबई में होता ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी के जो रेंटल है वो आपके 8 से 10% साल के साल बढ़ जाता है, जो रेंटल ग्रोथ है। ऐसे आप देखेंगे तो पेट्रोल का या डीजल का प्राइस है वो भी करीबन आपका 8% के आसपास आपका बढ़ जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अदर जो चीज़ें हैं विच इज लिंक विद द दिस ट्रांसपोर्टेशन, उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। फेयर इंक्रीज हो गया तो आपका फूड का प्राइस भी बढ़ जाएगा, देन यू विल सी द राइज ऑफ द अदर प्रोडक्ट प्राइसेस। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो है, तो यहाँ इन्फ्लेशन मुंबई में जो है वो करीबन आप एज्यूम कर लीजिए कि 9% के आसपास है। बट वेन यू गो टू द some Vidarbh side in Maharashtra, the village location, right? There it is more on agriculture commodities, right? So वहां पे उतना सर्विस वाला है ही नहीं फंडा। There is no too much vehicles, there is no too much say educational institutes, there is not too much medicals, or say there is no much rentals, right? तो वहां पे उतना है ही नहीं, उसका सर्विस भी सेगमेंट वहां पे नहीं है। सो देयर इन्फ्लेशन यू विल फाइंड सम अराउंड 3 to 4%, राइट। तो ऐसे में जो है, व्हेन वी टेक द नेशनल लेवल एग्रीगेट इन्फ्लेशन रेट, देन इट कम्स टू से 6.5%। सो व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेनिंग यू होल दिस थिंग इज कि यहाँ भी जो है वी हैव टू बी गो विद द प्रॉपर, कि भाई आपका लोकेशन कहाँ का है, कैसा है, आपको वो सिनेरियो जो है यू हैव टू बी अ कंसीडर।
That's I'm telling you, in this investment field, nothing is say fix, कुछ भी fix नहीं है, everything is a subjective. आप कितना उसको, you understand the whole this scenario system, and accordingly you have to uh, select the numbers, or accordingly you have to assign the value. Clear? So inflation rate is 6.5%, and now we take a say real rate. Real rate means how is the real growth is happening. For example, it is a 7% or 7.5%, right? So what is the nominal rate or nominal return? So this nominal rate, you can just have to uh, if you going with the thumb rule, means like a layman, you just take the inflation plus your real rate, you will get a nominal rate is 14%. So that you can understand by this example. जैसे अपनी in our country, like we have inflation in some around 6.5%, और अभी जैसे आप देखेंगे our GDP growth which happens is some around say 6.5 percent. So nominal growth happens of our GDP, मतलब अपना जो टोटल जीडीपी का साइज है वो कितना ग्रो किया. So that you take inflation like 6.5 plus our जो रियल ग्रोथ हुआ है जीडीपी का विच इज से 7%. तो 6.5 प्लस 7 विच इज 13.5 मीन्स अपना जो जीडीपी का साइज है विच इज ग्रोइंग which has grown by 13.5%, right? That is called a nominal GDP. GDP real, right? या फिर if you say the normal, I mean you just have to see the GDP, that means it is clear it is a real GDP, right? So I say the GDP real growth, say 7%, and here I say the inflation rate, so assume it is 6.5%, then how much is the GDP nominal growth? It is happening, that is I am going with the thumb rule, 7% plus 6.5, it comes to 13.5%. What do you mean by the nominal GDP growth? इसको आप ऐसे समझिए कि हमारा जो जीडीपी का साइज है अपना जो इकोनॉमी का इंडिया का विच इज सम अराउंड से $4 trillion. हाउ मच इट इज? इट इज a $1 trillion. That is the size of our GDP when it is, you can say the current at present 2000, आप बोल सकते हो कि 2025 में ये मेरा साइज है जीडीपी का. अब ये 2026 and so on, just try to understand. So our prime minister is saying ना कि we are becoming a world third largest economy. ये कैसे होगा ये? तो हमारा जीडीपी का अभी जो साइज है वो $4 trillion का है, एंड रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% हो रहा है. ठीक है ना? व्हाट इज द जीडीपी? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या होता है कि भाई मैंने कोई चीज बनाया, ठीक है, उसको सेल किया, तो ये जो आपका मतलब जो है सेल किया तो जो पैसा आया दैट विल कम इन द रिकॉर्ड, दैट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द जीडीपी. ठीक है. एंड देन जिसने उसको परचेज किया उसने आगे सेल किया, दैट ट्रांजेक्शन विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ जीडीपी. फार्मर ने जो है दे प्रोड्यूस दे ग्रो अ क्रॉप, so that crop they sold, so this getting a money, that is a part of the GDP. For growing a crop they purchase say they purchase seeds or fertilizer, that is the becoming a part of a
जीडीपी. सो दैट इज कॉल्ड अ जीडीपी, राइट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. कि भाई जो भी सारे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका ग्रोस जो है वो अपना जीडीपी है. अब ऐसे में सपोज कीजिए कि अगर सारी एक्टिविटीज वैसा ही चल रहा है, ऑल द एक्टिविटीज गोइंग विद द सेम वे, ठीक है, देर इज नो चेंज, लेकिन अगले साल जो है ड्यू टू द इन्फ्लेशन आपका जो हर चीज जो है वो 6.5% से महंगा हो गया. जस्ट एज्यूम कीजिए कि पिछले साल मेरा जो जीडीपी का साइज था वो 100 था, एंड ड्यू टू द राइज ऑफ इन्फ्लेशन अभी जो है वो हर चीज जो है 6.5 रुपए आपका महंगा हो गया. तो व्हाट विल बी द योर जीडीपी साइज? दैट इज वी से कि मेरा जीडीपी जो है वो 100 से बढ़ के मेरा हो जाएगा 106.5, क्योंकि सारी चीजें जो है मेरा 6.5 रुपए महंगा हो गया. तो मेरा जो जीडीपी का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. बट देर इज नो एक्चुअली चेंज इन द रियल सेंस ऑफ अ जीडीपी. रियल में मेरा जीडीपी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. माई रियल जीडीपी सपोज ग्रोथ इज 0 एंड मेरा इन्फ्लेशन इज राइजिंग, तो क्या होगा, एवरी प्लेस देर विल बी अ इंक्रीज इन अ प्राइस. हर जगह प्राइस महंगा हो जाएगा, ठीक है ना. आप महंगा खरीद भी रहे हो और आप महंगा बेच भी रहे हो. तो ऐसे में क्या होगा कि जीडीपी का जो साइज तो बढ़ जाएगा बाय द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन, बट आपका रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0 है. क्लियर? तो इफ अवर रियल जीडीपी ग्रोथ एज्यूम कीजिए कि ये 7% है एंड इन्फ्लेशन इज टेकिंग अ 6.5, तो अवर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ विल बी 13.5. ये आई एम गोइंग विद द वेरी कंजर्वेटिव. सो व्हाट हैपेंस इन अ, अभी अगर 2025 में अवर जीडीपी का जो टोटल साइज है वो है 4 ट्रिलियन, एंड इफ दिस विल ग्रो बाय द रेट ऑफ अ 13.5%, राइट. इन दैट सिचुएशन 2026 में we will having a 4.54, 2007 में we will be a 5.15. तो सेम थिंग इज गवर्नमेंट सेइंग कि भाई बाय 2026 एंड या 2026 के बिगिनिंग में वी विल बी अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा बिकॉज अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में, तो once you touch the 5 trillion dollar size, you will become a third largest economy. And this way if we keep continue, then आप देखेंगे कि by what expecting here कि अभी अगर by 2033 we will be a some around 11 trillion dollar, या आप बोल सकते हो कि by 2032 यहाँ पे क्या है, just have to increase the little bit more your growth projection. 7 से अगर मैंने इसको 8 कर दिया, तो यू कैन थिंक सो सम अराउंड बाय 2031. और अगर थोड़ा ग्रोथ और भी फास्ट हुआ, राइट, तो बाय 2000 से 30 और 31 वी विल बी अ 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, राइट. तो ये सिनारियो जो है विच इज वी आर एक्सपेक्टिंग, इसी के बेसिस पे जो है ये सारा कैलकुलेशन है. अब नाउ यू मे से द सर द राइज ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द आवर जीडीपी ग्रोइंग. ये जो आपका जीडीपी का साइज है, तो इट इज नॉट ऑलवेज दैट विल बी ट्रू टू द सम एक्सटेंट. आफ्टर दैट अगर वो इन्फ्लेशन विल ग्रो फर्दर, तो उसमें क्या होगा, देर इज द इम्पैक्ट विल कम बिकॉज योर करेंसी विल आल्सो डेप्रिशिएट, राइट, सब्सटेंशियली. एंड that cause the your inflation will go, I mean your growth will be uh, suppressed. Your growth जो है, अगर growth के साथ में inflation some contributing, then it's okay. If there is a simply inflation and there is a no growth, that is a scenario like in a Pakistan, then you will see there is a significant devaluation or depreciation of your currency against the foreign currencies like a dollar, euro और pound के अगेंस्ट में. तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा. You want to see, you can see this chart like Pakistan currency versus US dollar chart last 10 years. ठीक है.
So over the past decade, the Pakistan rupee has experienced a significant depreciation against the US dollar. 2014 में क्या हुआ? The average exchange rate was approximately 102. ठीक है, और अभी 2023 में जो है द रेट राइजेस टू 248, मतलब आपका मोटा मोटा 10 साल के अंदर आपका करेंसी जो है वो 150% डेप्रिशिएट हो गया. एग्री? So you can see the यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पाकिस्तान रुपी so you can see USD 1 is equivalent to now 278 is the Pakistan rupee. If I have to go with the maximum chart, so that give you the this clarity. How is their currency? So in 2012 it was 90, and now it turns reached to a 278, right? And if you see the inflation, just have to type the inflation uh, chart in Pakistan. ठीक है, तो आपको exactly करना. That is the Pakistan inflation chart. So it is they are almost running with a say average. You see, not exactly this data up. If you take a time and see. So if you see the average inflation, which is they are having from last say uh, 7 to 8 years, which is in range of 20%. ठीक है, ये एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान का 20%, राइट. एंड ग्रोथ दे व्हाट दे हैव इज हार्डली से 3% or 4%. So that's the crisis, right? So I think that concept here, what I'm trying to explain, nominal rate, how to calculate a nominal rate. One is the thumb rule. You take the inflation rate plus a real rate, so you get the nominal rate, right? So now the nominal rate is having a real rate and including your inflation. मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 100 रुपए का 100 रुपीज इज द प्रोडक्ट प्राइस. उस में आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया. नाउ दैट प्रोडक्ट इज बिकमिंग 105, and because of the inflation
ठीक है, मान लीजिए 7-7% का इन्फ्लेशन है, तो अब एक्चुअल में आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा वो 105 प्लस 7 मीन्स 112। तो व्हाट इज द नॉमिनल ग्रोथ? तो नॉमिनल ग्रोथ इज नाउ 12%, क्योंकि 100 रुपए का चीज हो गया 112। तो सेम थिंग इज हियर। नाउ दिस इज द थंब रूल टू कैलकुलेट द नॉमिनल रेट विच इज इन्फ्लेशन प्लस रियल रेट। आपको जो एग्जाम में है आप ये वाला यूज करके देखिए, ठीक है ना। दूसरा जो है इसका एक्यूरेट वे, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग विद द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग, डूइंग द रिटायरमेंट प्लानिंग, तो द राइट फॉर्मूला जो है वो है आपका 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वलेंट टू 1 प्लस रियल रेट into 1 plus inflation rate. That is the more accurate, right? So if you have to be look at this and calculate nominal rate, then कितना आएगा आपका? Just take this given example. Real rate is 7.5, then 1 plus inflation rate, then minus 1, it comes to 14.48. So you will see that much difference. By the thumb rule, you are getting a 14%, and by going with this precision, this precise method, okay, you are getting this result. Correct? So when you are going with the comprehensive financial planning, retirement planning, right? So you have to calculate nominal rate by this method. But in general, if you go with some thumb rule approach, you can calculate, use this thumb rule approach to calculate nominal rate. क्लियर? अभी आपके एमएफडी में कोई एग्जाम में जो है आपको, आप इस रेट पे जाएंगे चलेगा। अगर आपको आंसर मिलता है इस मेथड से, यू गो विथ दिस मेथड, यू ट्राई फर्स्ट दिस मेथड बाय क्लबिंग दिस इन्फ्लेशन रेट एंड रियल रेट एंड गेट द नॉमिनल रेट। राइट, एक क्वेश्चन आपका इसमें मोटा मोटा आ ही जाता है इसमें, ठीक है। And if you getting two answers, like one is this and another is this, then you have to tick mark on that one. ये जो नॉमिनल रेट हमने कैलकुलेट किया बाय फॉर्मूला, आपको इसके थ्रू जाना है। क्लियर? ओके, ये भी हो गया। So factors to evaluate investments. What are the factors we have to look at when you evaluate an investment? So you have to be look at like safety. How is the safe your investment? Liquidity. Liquidity is also important ki as and when you want to withdraw, you want to redeem, you want to encash, how it is available, in what friction, means can you withdraw the full amount, can you get the partially, right? So it also matter the liquidity. Then we talk about returns. Ki how much return is generating by your investment. So when you have to look at the factor, so you look at the returns which is generating by your investments when you evaluate the some investment instrument. एक क्वेश्चन आपका इसमें से more or less आपका आता ही है related to the your evaluating investments. See what are the factors you have to look at. So you have to look at the safety, liquidity, returns, convenience, कि how it is convenient, like इन्वेस्टमेंट वाया जस्ट ऑनलाइन आपने बैठ के डिजिटली ऑनलाइन कर दिया, दैट इज द वन कन्वीनियंस, दिस इज द वन पर्सपेक्टिव। अनदर इज यू हैव टू गो टू द लोकेशन, वहां पे जाके आप लैंड जो है देख रहे हो और वहां पे जाके आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, दैट इज द अनदर वे। सो यू हैव टू लुक एट द कन्वीनियंस कि भाई कन्वीनियंस फैक्टर कितना है, एंड दैट फैक्टर यू हैव टू कंसीडर इन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन another thing is ticket size, कि भाई ticket size क्या है। in a case of a mutual fund you can do the start your investment from a rupees of 100, आप 100 rupees से start कर सकते हो। but when you are going to buy a property, you can't buy a property on a rupees of 100, right? So
in that case of buying a property, obviously the ticket size is larger, quite large than the investing in a mutual fund. So that factor also to be considered at the time of your investment decision ki bhai why to choose a mutual fund or why to choose a property or gold or any other asset classes for your investment. So look at ticket size, convenience, returns potential, how it is liquidity perspective, safety, right? Then look at the taxability of income, ki how much tax it will charge, what are the short term capital gain, long term capital gain. So this taxability also have to be looked at in your investment decision. Then we talk about a tax deduction, ki at the time of is that tax will be deducted by the authority or I have to pay the tax. So that thing you have to look at कि भाई इसमें कैसे होगा, because previously what happens when mutual fund companies were paying tax, sorry, mutual fund companies were paying say dividend on the investments. So they were actually deducting the tax at their end on a dividend payout, and then credit the dividend in a investor's account. But now this tax deduction at source is removed, and now the investor has to pay the dividend based on the what they have a tax slab. So on the criteria of their tax slab, they have to pay the dividend on that proportion. Clear? So this tax deduction concern also you have to be look at it. Now ओके तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया. सो टोटल वी नाउ हैव सम अराउंड से 8 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं अभी तक. ओके नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट असेट क्लासेस. सो एज वी सेड कि सी असेट क्लासेस, first of all, what are the asset classes? See, you are investing in a stock. For example, like Tata Consulting or Infosys or SBI Bank or say Punjab National Bank or you say NTPC. So all these are different stocks in a equity category, but iska asset class jo hai, that is only one, which is the equity. So equity is the one asset class. Similarly, various debt instruments like debenture, bonds, corporate deposits, FDs. So these are the debt instruments. इसका जो asset class है, that is called a debt. Okay. Then you are doing the investments in a real estate like a commercial property, residential property, land. ये सब जो है, all these category comes under the real estate. That is the another asset class. Then you are going to do the investments in a like agriculture commodities like spices, petroleum products such as petrol and diesels, metals like gold and silver. So commodities is the another asset class. Clear? Okay, so this way we have a different asset classes. Clear? So asset classes like equity is the one asset class. Debt, that is also called a fixed income. So fixed income is the another asset class. Then you have a real estate or infrastructure is the another asset class. Commodities like a gold, silver, gold funds, commodity ETF, right? So these are the another asset class. And there are some hybrid asset classes like a hybrid mutual funds or multi asset funds. तो ये आपकी hybrid asset class हो गया. Then there are the some more asset classes like rare coins. आपने क्या है, कुछ rare coins आपने खरीद I mean collect किया है. So that is the, और arts है, कुछ आपकी art paintings वगैरह हो गया, या some rare stamps है. So that is the another asset class. So this is the way you can segregate the asset classes. Just try to understand. Equity is the one asset class, debt, yeah, fixed income is the another asset class, commodity is the third asset class, real estate is the another asset class, hybrid asset classes, and then there are the asset classes like rare coins, painting or rare stamps. ठीक है, so ये एक अपनी अलग
asset classes हो गई. So when we say the funds like a multi asset allocation fund means they are going to put the money in a different asset classes, right? So multi asset allocation fund and another fund name is multi cap fund are not the same. In a multi cap fund, they are, in that case they are going to invest in a equity category, but under the equity there are the large cap, mid cap, small cap. So they are going to put at least 25%, 25% and 25% in a large cap, mid cap and small cap in a multi cap fund, right? But यहाँ पे investment is happening only in a say equity and some part which is happen like 5-10% in a debt. That is the scenario of a multi cap fund. But when we say the multi asset fund, multi asset fund में क्या हो गया, now there are the different asset classes like equity है, debt है, commodities है, आपका real estate है, some से rare coins हो गया, rare paintings है, stamps, rare stamps हो गया, ठीक है. So there are the different asset classes, that is called a multi asset fund या multi asset allocations. Clear by the meaning of a asset class? So don't confuse by the asset classes. Equity is a simple one asset class. Clear? Okay, now the investment risk. So when you are going to do the investment, so there are the different type of the risk an investor faces, like inflation risk. कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, you are expecting a 15% return, and at the time when you are going to invest, that time inflation is 6%. लेकिन अब आपका एक साल कंप्लीट होने आया and you are suppose making a 15% return, but inflation that at the time of investment it was 6%, और अभी इन्फ्लेशन आपका बढ़ के हो गया 10%. तो इन दैट केस यू आर रियल और इफेक्टिव जो रिटर्न है दैट विल रिड्यूस, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन के टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया था एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 15% रिटर्न, लेकिन जब आपका मैच्योरिटी आया उस टाइम पे इन्फ्लेशन जो है वो 6% से बढ़ के 10% हो गया, तो आपका इफेक्टिव जो रिटर्न है इट शुड बी, और से द रियल रिटर्न वो कितना होना चाहिए था. In a like a standard case, 15% is you making and 6% is the inflation. So 15 minus 6 is a 9%. That should be the your real return. But your inflation is increased from 6% to 10%, and your return is 15%. So effective return or real return will be only 5%. So that is the investment risk. Second is the liquidity risk. कि भाई you are trying to sell your investment, but you are not getting the buyer. So that liquidity risk is higher in case of like commodities, sorry, like in the case of a real estate, right? वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा. It's a liquidity risk because it is difficult to sell, and it is difficult to sell partially. So liquidity risk is also the important concern at the time of deciding the investment. Credit risk. What is the credit risk? Like falling the creditability of a company. Like suppose a company which issued the particular say bond or debenture या जो भी debt instruments है, that time that company was triple A rated. उसका जो bond है इस उसको आपको ट्रिपल ए रेटिंग मिला, लेकिन नाउ द ड्यू टू द डिक्लाइनिंग ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल्स, अभी कंपनी जो है वो आपकी रिस्की कैटेगरी में आ गया. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल इट इज नाउ इन डबल बी रेटिंग में. तो ऐसे में क्या हो गया, दैट पर्टिकुलर जो बॉन्ड है वो भी उसका रिस्क, आई मीन रिस्क विल इंक्रीज एंड दैट रेटिंग आल्सो फॉल्स. ठीक है, जो आपका ट्रिपल ए था अब वो बॉन्ड आपका डबल बी का रह गया. दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट रिस्क. That also another way you can understand, like someone is approaching to a bank for a loan. तो जब उसने अप्रोच किया था उस टाइम पे उसका रेटिंग जो है बैंक ने देखा सारा प्रोफाइल, उसने कहा दैट्स हैविंग अ गुड प्रोफाइल, ठीक है ना. या उसका जो सिबिल स्कोर है उस टाइम पे मान लीजिए कि सिबिल स्कोर वाज 800, है ना, और उसको बैंक ने ऑफर रेट किया कि भाई हम आपको
8% के ऊपर होम लोन दे देंगे। अब क्या हुआ कि साल भर के या 1.5 साल के अंदर उसका जो सिबिल स्कोर है वो आ गया 600, राइट। सो इन दैट केस अब उसका जो रिस्क है वो बढ़ गया, बिकॉज अर्लियर इट वाज 800 सिबिल स्कोर, नाउ इट इज 600, मतलब उसका जो बंदे जो पर्सन है द बोरोवर, उसका रेटिंग कम हो गया। सो तो जो लैंडिंग है वो आप जो उसको 8% पे आपने किया था, नाउ आइदर यू हैव टू चार्ज द मोर रिटर्न्स, more premium on that interest what you are charging from the borrower, which can compensate the risk। तो अगर 600 का उसका अगर सिबिल स्कोर आ गया है तो आप उसको मान लीजिए यू विल चार्ज अ 10% रिटर्न, कि भाई 8 की जगह अब हम आपका होम लोन का इंटरेस्ट इज नाउ वी आर डूइंग अ 10%, बिकॉज आपका रिस्क प्रोफाइल इंक्रीज हो गया। तो सेम थिंग द क्रेडिट रिस्क increases or decreases in the case of a investment. So that is the part of the investment risk. Next is the your market risk and price risk. So when the securities are traded in an open market, people can buy or sell the same based on their opinions. It does not matter whether these opinions are based on facts or otherwise. Since opinions may change very fast, the prices may fluctuate more in comparison to the change in facts related to securities. Such fluctuations are also referred as the volatility. So that is also a market risk. Now you can see in the market how is in the last say 2 months the Sensex is like reached on a higher side. It is 86,000. Now it fall to the level of 78,000. It's almost you can say the 8,000 rupees 8,000 point correction in a Sensex, right? So that is I'm talking about a Sensex means market. If you have to look at an individual stock, you will see there are the several stocks which is corrected by 25 to 30%, right? So that correction of a price, declining of a price, that is called a market risk or price risk. Okay, interest rate risk. If you have invested some money and in meanwhile during the time of your investment, if suppose the interest rate will increase in the market, right? So that also the risk on your investment, right? You borrowed the capital and suppose you borrowed the capital at a rate of 10%. अब वहां पे उन्होंने now they increase the interest rate from 10 to say 13%. Now they are charging a higher interest. So that risk is also linked with the your investment. Agree or not? Like suppose you started some project and you borrowed the capital from the market like a bank. Now अभी बैंक ने आपको दिया 10% पे, but now the bank is saying कि now you have to pay me as a 13%. So that is the interest rate risk is lying with the borrower, right? And if you have invested in a some bond and market में you have invested at a suppose bond का price is assume it is a face value is 100 and you purchase a bond at a price of 98. अब क्या हुआ कि market में interest rate increases. So in such a situation what happens कि आपका जो bond का price है when you bought it is 98, now it will fall. So bond price suppose fall to a say 97. So at that point you will have a say loss, because you bought at a price of 98, now you are selling a bond at a price of 97. So that risk is lying in a bond investment. If the interest rate will increase in the market, bond price will fall and vice versa. Risk measures and management strategies. So there are the different strategies like you have to avoid. How can you manage a risk? First is you can avoid means you don't have to take any risk. You don't do anything. Just have to be sit silent. Then there is no risk. So that is the one scenario. Second is take a position to benefit from some event or development. दूसरा क्या है कि भाई let I have to do the something, take the benefit of by doing some event या कोई development हो रहा है, so I have to be put my money, right? So I put my money in that activity, that event, so my money will grow as the that event or development happens. So that is the one part.
थर्ड इज डाइवर्सिफाई, कि भाई आपने अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को, सपोज यू हैव अ 10 crores rupees, सो यू हैव टू पुट द योर इन्वेस्टमेंट इन अ डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स। आपने क्या किया कि साहब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डेट में किया, यू हैव इन्वेस्टेड इन द कमोडिटीज, यू हैव इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट, राइट? सो यू हैव इन्वेस्टेड इन द फॉरेन करेंसीज। तो आपने ऐसे करके जो है यू हैव टू पुट द मनी इन अ डिफरेंट बकेट्स। अब नाउ अंडर द सिंगल बकेट आल्सो यू हैव डन द डाइवर्सिफिकेशन, लाइक जैसे इक्विटी है, सो यू हैव मेड द इन्वेस्टमेंट इन अ लार्ज कैप फंड्स, इज मिड कैप, स्मॉल कैप। तो इससे क्या है, नाउ योर पोर्टफोलियो इज अ मोर डाइवर्सिफाइड. So this way you can reduce your risk going with the diversification, right? So your portfolio will be less volatile compared to the market, right? And one simple thing is, if the whole market will fall, and in that proportion your portfolio also the fall in the same level, right? So if you have to look at in a realistic picture, the purchasing power of your portfolio will remain the same. बिकॉज अगर पूरा इकोनॉमी में सपोज कीजिए कि 100 रुपीज का जो है वो करेक्शन होके 90 रुपीज रह गया, दैट इज द ओवरऑल मार्केट में, राइट? तो ऑटोमेटिकली जो एट द टाइम व्हेन द मार्केट वाज प्राइस लेवल ऑफ 100, उस टाइम पे जो अदर थिंग्स का जो प्राइसेस था, राइट, लाइक स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अ रियल एस्टेट, राइट? सो बाय पेइंग 100 रुपीज दैट टाइम जो रियल एस्टेट का प्राइस था, नाउ इट इज दिस 100 रुपी इज करेक्टेड टू 90, तो ऑटोमेटिकली द रियल एस्टेट का जो प्राइस है दैट आल्सो हैज टू बी करेक्टेड टू दैट एक्सटेंट. सो इन मोटा मोटा आई मीन योर परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी इज रिमेन द सेम, बिकॉज आप जो चीज लेने जा रहे हो उसका प्राइस भी जो है उस प्रोपोर्शन में कम हो गया. एग्री और नॉट? So where your investment is well diversified, having a link with the market or economy, then you can see you are having a less risk. It is more diversified. So that's a you have to follow the risk management strategies. Now the behavioral biases in the investment decision making. So I have a okay, now it's a 2 minutes left. So see, next time I will discuss, because this is a quite important behavioral biases in the investment decision making. इसमें से you can assume 2 to 3 questions will come, definitely come, means there is no exception. I think so कि ये जो है इसमें आना ही आना है आपके. तो 2 से 3 क्वेश्चन इस पे आते हैं, and that time we will discuss, and we'll take understanding the asset allocation, and then we have to next time we'll do these practice questions. We'll go through with these questions, okay, and we'll take the next chapter. So for today, if you have any question, any doubt, you feel free to ask. I'm very happy. You see, the nominal rate of return which we are speaking of, so can we say that the investor needs to beat this return, or but why is this used? See, nominal rate of return is the return which is having a one component is your, say, inflation, yeah, you can say indirectly it is risk free rate, okay? Okay. And another component which goes to the your, say, risk premium, या आप उसको बोल दीजिए in terms of a GDP, like a real GDP growth. So what is the total, I mean, impact you are seeing the on your asset? That's why I said I created this example. Yeah. Like your asset जो GDP का size है वो आपका 4 से 4.56 और समथिंग, दिस इज इंक्रीजिंग बिकॉज आपका रियल जीडीपी ग्रोथ 8% से है, इन्फ्लेशन 6.5 है, तो मोटा मोटा मेरा जो जीडीपी का साइज है ऑन एग्रीगेट इट इज ग्रोइंग बाय 14%. ठीक है, तो सम एक्सटेंड योर इन्फ्लेशन इज गुड, क्योंकि दैट इज हेल्पिंग इन अ ग्रोथ ऑफ योर, आई मीन, नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी. Okay. बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट टर्न्स टू इन अ क्राइसिस, अगर आपका इन्फ्लेशन जो है इट इज गोइंग इन अ सम रेंज ऑफ से लाइक 11-12%, then what happens, it shoot up,
वो आपका 10-12 से जो है, it will become a 20% and then it become a 40% and you will see like a scenario like a Cambodia or Venezuela or something like that. Yes, sir. Right, because then the prices rises which is uncontrollable manner. Getting my point? Okay. So inflation for an emerging market, if it is in a under control, it is good. If it is in a range of like 4 to 6 or 6.5%, it is okay. But if it is going like a 10%, 11%, and that time you see the phase like in year 2000, say if I'm not wrong, 2009, 10, 11, that time the inflation was some around 10, 11%. Right. No, so my question remains the same that why do we use this nominal rate of return? So I have to see na, ki how is the size is increasing. Okay. That's why we have to take the nominal. Suppose you are working as an employee. Look at, you are working as an employee. ठीक है, company says कि okay यार, we are paying you a 1 lakh rupee salary per month. Then said okay fine. Now there is a inflation is say 7. You are sitting in a metro city. Inflation is a 9%. ठीक है ना? And company said कि भाई we are giving you the salary hike which is a say 11%. ठीक है, तो you will be very happy, or yeah, I'm getting a 11% salary hike. I mean, that is the general I'm saying, not Yeah, you, I understand. right? Yeah. So what is the actually real hike in a terms of a percentage? Because भाई इन्फ्लेशन ही मेरा 9% है, तो अगले साल जो है मेरे बच्चों की फीस जो है वो 9% से बढ़ जाएगी, 9% Yeah. से मेरा कार का मेंटेनेंस 9% से इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेरा ट्रेवलिंग हो गया, ये सब चीजें जो है मेडिकल एक्सपेंसेस है वो सब 9%, मतलब मोटा मोटा मेरा जो है वो एक्सपेंसेस 9% तो वैसे ही बढ़ना है। Yeah. ठीक है, अभी सैलरी हाइक मुझे दिया है 11%, तो मेरा रियल हाइक कितना हुआ? अगर 2. इसको थंब रूल से जाएंगे तो 11 माइनस 9, 2%। एंड इफ यू गोइंग विद द प्रॉपर फॉर्मूला अप्रोच से, तो 1 प्लस आपका जो नॉमिनल ग्रोथ है वो कितना है? 11%। यही है ना? नॉमिनल ग्रोथ जो है इट्स 11% एंड रियल हाइक आपको निकालना है, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू टेक दैट फॉर्मूला 1 प्लस नॉमिनल ग्रोथ इज इक्वल टू, या नॉमिनल ग्रोथ की जगह ऐसे द नॉमिनल रेट is equivalent to 1 plus inflation into 1 plus real rate, right? So in that case, here nominal rate is given, 11. inflation is given, you need to calculate a real rate. So real rate will be very simple. You take a 1 plus nominal rate divided by 1 plus inflation minus 1. So it comes to 1.83%. एक्चुअल में जो आपको इफेक्टिव हाइक हुआ है उस कैंडिडेट का, इट इज 1.83%। गेटिंग अ पॉइंट? सी फाइनेंस सब्जेक्ट इज रियली इंटरेस्टिंग, बट इसके जो स्मॉल स्मॉल जो है ना, once you have a clarity of these things, then you will realize the how, I mean, what is the reality, and then you start I mean, you can say generating returns on getting the right advice. Until unless not having a that clarity, आप कुछ भी बोल दो। राइट, क्योंकि अल्टीमेटली आना आपको इसी वे में है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी मस्ट हैव अ गुड क्लियरिटी ऑन द concepts, so we can bring something concrete to our investors. Clear? That is the important part. So I think that's
Sufficient for the today session. Any question participant has, feel free to ask. Okay, so there is no question from the participant end. I'm going to stop recording. Fine, so let's we should end the today meeting, and we will connect on 4th, which is Saturday, same time, evening 6 to 10. And as I discussed, what we are going to we learn. So it's what we have in a chapter 1, then we'll take a chapter 2. So I'm expecting we will, by the next session, we can complete almost 20% of your syllabus. Fine, guys. Thanks a lot. Sure. Thank you. Good night. Yeah, good night. So how was the session? Good so far. Good, understand? Yeah. Rohit, आपको clear Yes, है? sir. Session was interesting and understandable, sir. Oh, great. Miss Gargi madam, क्लियरिटी है? यस सर। कुछ हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम तो नहीं आया? नहीं 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 नहीं, सब ठीक समझ में है, आ रहा है, अच्छा हुआ। ठीक है. एंड मिस हुनी, व्हाट्स अबाउट यू? Yes, sir. Understand. And ग्रेट, interesting also. नाइस नाइस. इशिका, ऑल गुड? Naomi, what's about you? Yes, sir, all good. I just wanted to ask that can you upload the recording today itself? Naomi, I'm not sure today because uh, let me check. Will take probably not today, but tomorrow I will try. By tomorrow I will do it. ठीक है, अगर And कुछ how मुझे can we access the recording? Like that I where will share with you. Don't worry. That I will share with you that link, and by clicking on that link you can play. Okay. Right? वो आपको सब स्मूथली रहेगा. Okay. Thanks a lot. Thank Thank you. you, sir. Yeah. Good night, sir. And be थैंक यू सर। yeah, and be continue keep attending these sessions. It is not limited to the mutual fund distribution. See, I'm my trying level best to get, I mean, giving you the clarity by each and every small concepts. ठीक है, आई कैन टेल यू द पीपल दोज हैव अ एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसके बाद जो है उनको अभी तक ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको लैक कर जाता है, बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर नॉट डूइंग अ प्रैक्टिस आपको वो चीजों का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. दैट इज द एक्चुअली दिस फाइनेंशियल मार्केट जितना इजी है उतना ही इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. राइट? ओके, थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट.